सलाम, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है पीएलजी के इस नए अंक में। आज का अंक है लेडीज स्पेशल और ये है पीएलजी 137। जी हाँ, 137 सप्ताहों से हम लगातार प्रोग्राम करते आ रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कवि सम्मेलन और मुशायरे के अलावा बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, स्पेशलाइज प्रोग्राम करते हैं। ये भी कवि सम्मेलन और मुशायरा ही है, लेकिन ये लेडीज स्पेशल है। आज का ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं पीएलजी की लेडीज है, जो कि आज की इवेंट मैनेजर भी हैं, शेरेबानो अकबरी जी। शेरेबानो अकबरी जी ने आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है और आज हमारी चीफ गेस्ट होंगी नसराल अदावी जी, जो कि ओमानी नेशनल है और अरबिक और इंग्लिश में लिखती हैं। वो कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेगी। आज के इस इवेंट की एंकर्स हैं फातिमा हातिम जी और पूजा जी। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे पास एक शोक संदेश है। हमारी एक मेंबर जो कई बार पीएलजी के प्रोग्राम में आ चुकी थी, स्नेह चंद्रा जी, उनका देहांत हो गया अभी पिछले दिन। तो हम उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। वॉल्यूम में यार धन्यवाद। श्रीमती स्नेहा चंद्रा जी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम रमेश किंगर जी को कि वो उनकी एक कविता सुनाकर उनको श्रद्धांजलि पेश करें। अनुपम जी। बहुत धन्यवाद तोफैल भाई। आंखों में आंसू हैं और लबों पर मुस्कान है कि हमारा ये सच में एक ऐसा परिवार है जहां पर स्नेह जैसे आदरणीय सदस्यों का मान सम्मान भी होता है और उनके जाने पर अफसोस भी होता है। आज उन्हीं के कुछ शब्दों से उन्हें श्रद्धांजलि देने का साहस कर रही हूँ। उनकी एक कविता से, जिसमें वो कहती हैं कि खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है ये उम्र का पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है ये उम्र का पानी। वक्त की बरसात है कि
थमने का नाम ही नहीं ले रही। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है ये उम्र का पानी, वक्त की बरसात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज दिल कर रहा था बच्चों की तरह रूठ ही जाऊं मगर, आज दिल कर रहा था बच्चों की तरह रूठ ही जाऊं मगर, फिर सोचा उम्र का तकाजा है मनाएगा कौन। फिर सोचा कि उम्र का तकाजा है मनाएगा कौन, रखा करो नजदीकियां जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, अपनी उम्र का मजा लीजिए। और वाह वाह, एक उनकी बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। उनकी एक बहुत खूबसूरत। छोटी सी शुभकामना दुआ जो उन्होंने हमारी एक बहुत आदरणीय और प्रिय सदस्य किरण जी को भेजी थी। आज किरण जी की अनुमति से मैं यहाँ आप सबको सुनाना चाह रही हूँ। वो कहती हैं कि हम रहें न रहें शुभकामना हरदम तुम्हारे साथ है। हम रहें न रहें शुभकामना हरदम तुम्हारे साथ है। जिंदगी की हर खुशी तुम पर मेहरबान हो। मंजिलें मिलती रहें, मुश्किलें आसान हो। जब कभी लगे तुम हो अकेले, जब कभी लगे कि तुम हो अकेले और कोशिश नाकाम हो, कोई द्वार ना खिले, कोई द्वार न खुले तो टूटना मत, रूठना मत मेरे बच्चे। कोई द्वार न खुले तो टूटना मत, रूठना मत मेरे बच्चे। धर हिम्मत जूझ पड़ना, सफलता मिलेगी और मिलती रहेगी। कि शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं, शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। ऐसे अद्भुत विचार रखने वाली स्नेह जी को हम सब की ओर से सादर नमन। ओम शांति। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद एक अहमद मिनट जी। बोलूंगी, एक उन्होंने सेकेंड। जी 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 मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्नेह चंद्रा जी हमसे रूठ कर चली गई और बड़ी विडंबना यह है कि हम उन्हें मना करना नहीं दे सकते। आज वो हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई हैं। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्नेह चंद्रा जी को पीएलजी में लाने का श्रेय किरण जी को जाता है और किरण जी की शिक्षिका भी थी और किरण जी उनकी अति विशिष्ट छात्रा थी और उन्होंने अपने एक मैसेज में किरण जी की तारीफ भी की थी कि ये बहुत ही अच्छी उनकी विशिष्ट छात्राओं में से एक थी, उनकी सबसे प्यारी छात्रा थी। हम चाहेंगे कि किरण जी कुछ शब्दों में स्नेह दीदी का जाना तो मेरे लिए बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति है। 2-3 साल तक वो मेरी क्लास की शिक्षिका थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उम्र भर मेरी मेंटर थी। जब कभी मैं उदास होती, अभी आपने कविता सुना था ना, उन्होंने मेरे ही लिए लिखा था, हम रहे ना रहे शुभकामना तुम्हारे साथ है। जिस दिन जयती का रिजल्ट निकला था उसी दिन वो राजी हुई थी पीएलजी में आने के लिए। और बड़ी बात ये है, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि उनको कितनी संस्थाओं ने निमंत्रण दिया, पर वो किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करती थी क्योंकि वो तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं थी। पर उन्होंने पीएलजी का निमंत्रण स्वीकार किया। सिर्फ इतना नहीं, एक बार आई और पीएलजी की होकर रह गई। कभी भी वो ऑनलाइन किसी प्रोग्राम में नहीं गई। हालांकि वो बहुत सशक्त हस्ताक्षर थी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों की व्याख्याता थी। तीनों पर बहुत मजबूत पकड़ थी, लेकिन वो पीएलजी की होकर रह गई। और वो पर्सनल शो भी उन्होंने मुझसे, जाने के सुबह भी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पीएलजी की आभारी हूँ कि उन्होंने सीनियर सिटीजन को इतनी बड़ी जगह दी है। इसलिए एक संध्या सीनियर सिटीजन के नाम रखता है, इसलिए मैं पीएलजी की आभारी हूँ। बस आज का कार्यक्रम शुरू करें। नमस्ते। बहुत धन्यवाद
और ये महिलाओं का कार्यक्रम है, तो मैं महिलाओं को ये कार्यक्रम सौंपता हूँ और मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। आज के मंच का कार्यभार मैं आज की इवेंट मैनेजर शेरे बानो जी को सौंपता हूँ, जो कि स्वयं एक बहुत ही विशिष्ट कवित्री हैं और उसके अलावा वो मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। उनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट छुपा है, बल्कि छुपा नहीं है, अब तो बाहर आ चुका है। उसके अलावा वो सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव हैं और सोशली उनकी यहाँ ओमान और मस्कत में अपना एक मुकाम है, बहुत जानी पहचानी हस्ती है उनकी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ शेरे बानो मुशैरा जी के पास कि आज के आगे का रागवाई शेरे बानो जी चलाएं। ओवर टू शेरे बानो जी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप सब लोग शेरे बानो जी के लिए एक जोरदार तालियां बजा दें। उन्होंने आज का प्रोग्राम बड़ी मेहनत से आज की इस संध्या को सजाया। ओवर टू। शुक्रिया तुफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सिमी जी, अनुपम रमेश कंगर जी, हमारे सारे जितने मौजूद हैं, हमारे कविगण हमारे साथ जो जुड़े हैं, आज के हमारे एंकर्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आज के प्रोग्राम के लिए। सबने बहुत मेहनत की है और हर कुछ महीने हम इस तरह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का साथ पाते हैं और ब्यूटीफुल पोइट्रीज और रेसिटेशंस करते हैं। अनुपम रमेश किंगर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो इवेंट होता है लेडीज स्पेशल 137, what's so special about this ladies event every time that we have every 3 months? Every few months we connect from different countries, same day, same time. We create a sisterly community like this, what we are seeing on the screen. We all are mothers, daughters, at the same time accomplished personalities and poets. When we gather here, we create a fraternity, our individuality, which nourishes our soul, families, and society. These type of PLG literary events give us the strength to push the ink in our pens and wings to our aspirations. Again, what's so special about today's event? There's always excitement and celebration, along with different ideas and creativity. And a normal poetry recitation we spice up. And I personally thank सिमी जी, जो उन्होंने आज का जो थीम है, जो फूलों का थीम रखा है, वो बहुत ही बेहतरीन थीम है और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये थीम हमको सजेस्ट किया। फूल के साथ तो होती है बुलबुल, गुल और बुलबुल, फूल के साथ होती है तितली, आज हम, आप और PLG। वेलकम टू एपिसोड 137 लेडीज। तो थैंक यू सो मच। आज के हमारे पास 16 poets हैं and many first all are Hindi recitations and then our English recitations, and I'll be inviting the anchor from Pune to take over the first session of this event. Let me introduce Fatima Hakim Pune से। ये पूना में फिलहाल रह रही है, उन्होंने बहुत साल दुबई में रिसाइड किया है और कैम्ब्रिज अबू धाबी स्कूल में ये टीचर भी रह चुकी है। And they say that, I feel she's a woman of immense strength, patience, and endurance. So I can compare her to a lotus flower. She loves to participate in cultural events. उन्होंने PLG और PAG दोनों ग्रुप्स में काफी सारे इवेंट्स में पार्ट लिया है उन्होंने, और स्पेशली हमारा पैक का जो इवेंट हुआ था उसमें ओवरऑल एक्सप्रेशंस का टाइटल उनको मिला था। एंड उनको बचपन से डांसिंग का बहुत शौक है, शी इज वेरी पैशनेट डांसर। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप में इनकी अक्सर वीडियोस, क्रिएटिव डांस वीडियोस आती है जो मैक्सिमम व्यूज मिलते हैं उनको। और बस इसी के साथ, इसी इंट्रोडक्शन के साथ फातिमा जी, मंच आपका है, पोएट्स भी आपके हैं। Thank you very much, Sherbanu ji, for this wonderful introduction. And dear Tufail Sahab, Simmi ji, Anupam ji, Sherbanu ji, our chief guest, Nasra Al-Adawi, and our PLG team, I welcome you all on this ladies special poetry episode 137,
So with your blessing, I begin today's event. It's my privilege to host today's Ladies Special Poetry Event. मुझे PLG से जुड़े रहना बहुत पसंद है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव किए, without any discrimination, ये लोगों की कला का प्रदर्शन करता है। यह कलाकारों का एक ऐसा मंच है जहां कला की होती है पूजा। और आज के जो हमारे पोएट्स हैं, उनकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और लिखने की जो स्किल, जो कला है, वो सच में काबिले तारीफ है। तो बढ़ते हैं अब हमारे इवेंट की ओर, और हमारे जो पहली पार्टिसिपेंट है वो है अंजलि सरस्वत। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। अंजलि जी has been an ex-teacher and ex-principal in various private schools of Lucknow. Anjali ji has written approximately 100 poetry and articles based on human feelings, especially about women. Some of her achievements are: Anjali ji has received Special Award of Perfect Shrimati conducted by Dainik Jagran and Medimix Lucknow. She has received Adarsh Mahila Award conducted by Pati Parivar Kalyan Samiti in India. She has participated many times in International Poetic Group PLG for poetry and stories. Anjali ji also posts many of her poetry on Facebook, YouTube and Instagram. So let's welcome our first participant of the event, Mrs. Anjali Saraswat. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से परिचय दिया। और मैं अपना रीसेंट एक अचीवमेंट है कि मेरी एक भावांजलि पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं। और सबसे पहले तो मैं स्नेह चंद्रा जी को श्रद्धांजलि देती हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी कामना ईश्वर से करती हूँ। और अब मैं सीधे अपनी पोइट्री पे आती हूँ। यूं तो बहुत सारे कवियों ने फूलों के ऊपर फूलों की उपमा दी है, फूलों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे फूलों को थोड़ा सा सादगी के साथ जोड़ा है। और आशा है आप सबको पसंद आए कि सादगी से भरा हो अपना जीवन, सादगी से भरा हो अपना जीवन, तड़क भड़क न कोई आडंबर, तड़क भड़क न कोई आडंबर, और इस उज्जवल से जीवन पथ पर महकता रहे जीवन का उपवन, महकता रहे जीवन का उपवन। जैसे कोई कुसुम बेला का, जैसे कोई कुसुम बेला का स्याह स्वच्छ सौम्य सा रहकर खुशबू से सजाता रहे जो चमन, खुशबू से सजाता रहे चमन। उसमें कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो महक होती है उससे पूरा जो चमन है वो महक जाता है। तो पाकीज़गी से भरा हो अपना जीवन, पाकीज़गी से भरा हो अपना जीवन, राग द्वेष न कोई जलन हो, राग द्वेष न कोई जलन हो, सौम्य सुरस और पवित्र राह पर, सौम्य सुरस और पवित्र राह पर शालीनता से बढ़े हर कदम, शालीनता से बढ़े हर कदम। जैसे कोई सुमन हर श्रृंगार का, जीवन के अंधियारे पथ पर सुगंध बिखेरे रात्रि भर आंगन, सुगंध बिखेरे रात्रि भर आंगन। और पवित्र शांति और सत्य के रथ पर, पवित्र शांति और सत्य के रथ पर आंधी तूफान न कोई भंवर हो, धवल विनम्र और सरल सफर पर, धवल विनम्र और सरल सफर पर निर्मल करता जो सारा जीवन। जैसे कोई पुष्प रजनीगंधा का, जैसे कोई पुष्प रजनीगंधा का सुंदर कोमल शीतल मन पर, सुंदर कोमल शीतल मल पर महक से महकाता रहे जो गुलशन, महक से महकाता रहे जो गुलशन। और कांटों से भरा अपना हर पथ, कांटों से भरा अपना हर पथ, थकान उदासी न कोई उलझन, थकान उदासी न कोई उलझन हो। जीवन के अनमोल सफर पर, जीवन के अनमोल सफर पर महके चमके जीवन का हर क्षण। जैसे कोई पुष्प गुलाब का,
जैसे कोई पुष्प गुलाब का जीवन के इस कठिन सफर पर, जीवन के इस कठिन सफर पर खुशबू फैलाता लहराता उपवन, खुशबू फैलाता लहराता उपवन। उपवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। वाओ अंजलि जी मैम, बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मैम, वेरी मीनिंगफुल पोएम। फूलों के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है आपकी कविता द्वारा कि हमारा जीवन भी सादगी से भरा हो, ना कोई जलन, ना कोई द्वेष। वेरी नाइस मैसेज मैम। और जैसे सभी तरह के फूल अपनी खुशबू से चमन को सजाता है, वैसे ही महकता रहे हमारा जीवन। वाओ, लवली मीनिंग। एंड मुझे आपकी ये पंक्तियों भी बहुत अच्छी लगी, जब आपने कहा जिस तरह फूल रात भर आंगन में खुशबू फैलाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन का अंधियारा पद भी खुशबू से बिखर रहा हो। सो विच मीन्स के फूलों की खुशबू, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। सो मैम, वेरी नाइस पोएम, आई जस्ट लव्ड इट। सो नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। Yes ma'am, thank you ma'am. Ma'am, now we move towards the next participant, and she is Babli Jha Bani. She had some problem regarding logging in, so I just want to know, is Babli Jha there? Bani Jha ma'am, are you there? Bani Jha is not to be seen. Can we take the next poet? Fine, okay, okay, fine, then we will move on towards the next poet, no problem. And so our next jewel of a PLG event is Dr. Minu Parashar Mansi. Dr. Mansi is from Doha, Qatar. I will give some introduction about her. मानसी जी एक लेखिका और कवयित्री है। मानसी जी एक कुशल टोस्ट मास्टर बता रह चुकी है, और वह पूर्व हिंदी प्राध्यापिका, means she was a lecturer in Hindi in Doha, Qatar. And some of her achievements are यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान में सलाहकार समिति की सदस्य थी, और जयपुर में राष्ट्र शिरोमणि पुरस्कार एवं संस्कृति युवा संस्था द्वारा दुबई में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। मानसी जी के कुछ रिटन वर्क है, कुछ प्रकाशन है, शोध ग्रंथ, मेरी उड़ान, काव्य संग्रह और कुछ लघु कहानियां भी लिखती है। So let's welcome our next jewel of our PLG event, Dr. Mansi. जी बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा जी, इतने प्यारे प्यारे शब्दों से मुझे बुलाने के लिए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना आपको? Yes मैम, आ रही है। तो सबसे पहले जी PLG, go ahead मैम। जी धन्यवाद। PLG के सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। सिमी जी, तुफैल जी, शेरबानो जी और फातिमा जी और मेरी सभी सखियां। और आज का जो सुंदर सा विषय है फूल, तो मुझे लगता है यहाँ इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, तो आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपनी रचना जो लेकर आई हूँ आज का, क्योंकि माहौल थोड़ा सा हम सभी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हंसाने की कोशिश करूंगी आप सभी को। और कहते हैं कि कभी कभी इस तरह के जो गम है वो हंसाने से दूर हो जाते हैं, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और स्वर्ग में स्थान दे, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। मेरी रचना आशा है आप सभी को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करेगी, तो आइए गौर से सुनिएगा। मेरी रचनाओं का मुमकिन, मेरी रचनाओं का मुमकिन ये शोखे हाल होते हैं, मेरी रचनाओं का मुमकिन ये शोखे हाल होते हैं, जो पढ़ दूं एक कविता तो सभी निहाल होते हैं, जो पढ़ दूं एक कविता तो सभी निहाल होते हैं। मेरी मासूमियत का है, मेरी मासूमियत का है यही अंदाज क्या कहना, मेरी मासूमियत का है यही अंदाज क्या कहना, अगर हंस दूं जो मुक्तक में तो कत्ले आम होते हैं, अगर हंस दूं जो मुक्तक में तो कत्ले आम होते हैं। और आज का जो विषय है तो मैं फूल लेकर भी आई हूँ। कोई है गुल कोई बुलबुल, कोई है गुल कोई बुलबुल, तो भंवरे क्यों न डोलेंगे, कोई है गुल कोई बुलबुल,
तो भंवरे क्यों न डोलेंगे, गुलाबों की हूँ मैं गुलकंद, चाशनी हम ही घोलेंगे, गुलाबों की हूँ मैं गुलकंद, बहुत सुंदर, बहुत चाशनी बढ़िया। हम ही घोलेंगे। सभी के दिल की कहती हूँ, सभी के दिल की कहती हूँ, सभी के दिल की सुनती हूँ, मेरे दिल में है क्या लेकिन यही सवाल होते हैं, मेरे दिल में है क्या लेकिन यही सवाल होते हैं। कभी होती है मायूसी, कभी होती है मायूसी, कभी होती है उलझन, जो सुलझ जाता है सब कुछ जब मेरे ख्याल होते हैं, सुलझ जाता है सब कुछ बहुत जब बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल होते हैं। नहीं हंसना तुम हालत पर, नहीं हंसना तुम हालत पर, नहीं रोना मुकद्दर पर, नहीं हंसना तुम हालत पर, नहीं रोना मुकद्दर पर, जीत जाते हैं बाजी जो सिकंदर खास होते हैं, जीत वाह वाह, जाते बढ़िया बात है। बाजी जो सिकंदर खास होते हैं। अब सबकी दुआओं की कामना करती हूँ अंत में, रहे सब खैरियत से अब न हो बर्बादियों का डर, रहे सब खैरियत से अब न हो बर्बादियों का डर, करे मालिक सुकूने हाल बेपरवाह सोते हैं, करे मालिक सुकूने हाल बेपरवाह सोते हैं। तो जैसा बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से 2-3 साल गुजरे, बस ईश्वर करे कि आगे ऐसा साल कभी ना आए। अंत में फिर से मेरी रचनाओं का मुमकिन ये शोखे हाल होते हैं, जो पढ़ दूं एक कविता तो सभी निहाल होते हैं, जो पढ़ बहुत दूं सुंदर, एक कविता तो बहुत सभी। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, इतने प्यार से सुनने के लिए आपसे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई निहाल हो गए वेरी मीनू जी। निहाल हो गए हम लोग। लवली। सच में अगर आप पढ़ दे अपनी कविता तो सभी निहाल होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुनकर। थैंक यू सो मच मानसी जी, रियली लवली, नाइस, वेरी नाइस। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर, नेक्स्ट ज्वेल ऑफ पीएलजी इवेंट, और उनका नाम है अर्चना झा। अर्चना जी इज फ्रॉम न्यू दिल्ली। अर्चना जी को शास्त्रीय संगीत से जुड़ाव है। वह हिंदी और मैथिली साहित्य में रुचि रखती है। वह ऑनलाइन पोर्टल पर भी लिखती है। रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में इनका योगदान सराहनीय है। अर्चना जी दुर्वाक्षर मिथिलाक्षर अभियान में निदेशक के पद पर है और वह अपनी संस्था को नई ऊंचाई पर लाने की हमेशा कोशिश करती है। So wish you all the best, Archana ji, for everything you do in all your future endeavors. So we welcome you on our PLG event. Archana ji, ma'am, are you there? जी 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 फातिमा जी, नमस्ते। बहुत बहुत आभार इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए। Most welcome, ma'am. प्रणाम, नमस्ते मंच, प्रणाम सिमी जी और मनोरमा जी, विभा तिवारी जी, शेरा बानो जी, फातिमा जी और यहाँ सभी उपस्थित मेरी सखियां और जो पीछे से हम लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, टुफेल भाई जी और भी जितने भी मेंबर हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि आज का माहौल लॉस है एक हम लोगों के लिए, इस परिवार के लिए, तो मैं उनको नमन करते हुए अपने पोयम पे आऊंगी। सबसे पहले एक मुक्तक या 2 लाइन में बोलना चाहूंगी। फूल पे ही, फूल टॉपिक है तो। अपने एहसासों को शब्दों के रंग बिरंगों फूलों से, अपने एहसासों को शब्दों के रंग बिरंगे फूलों से कशीदा कर सुंदरता से सजाएं, कशीदा कर सुंदरता से सजाएं। चलो आज कुछ सुंदर सुंदर फूल इस पीएलजी फ्रेम पर उकारें, चलो आज कुछ सुंदर सुंदर फूल इस पीएलजी फ्रेम पर उकारें। अब मैं अपनी मेन रचना पे आऊंगी। जी। कोने कोने से सुमन को चुनकर, कोने कोने से सुमन को चुनकर अपने बगिया में लगा लिया, स्नेह की शीतल छाया देकर सबको अपना बना लिया।
टुफेल भाई जी और सिमी दीदी के लिए, सिमी जी के लिए है स्पेशली ये। कोने कोने से सुमन को चुनकर अपने बगिया में लगा लिया, स्नेह की शीतल छाया देकर सबको अपना बना लिया। वो फूल खिलता ही चला गया, वो फूल खिलता ही चला गया, जिसने किया है माली को पूर्ण समर्पण। वो फूल खिलता ही चला गया, जिसने किया है माली को पूर्ण समर्पण। लिली, गेंदा, अरहुल और गुलाब, लिली, गेंदा, अरहुल और गुलाब उद्यान में लग रहे हैं सबके सब लाजवाब। ये जो फूल का नाम ले रही हूँ वो आप ही लोग हैं जो आज इतने सुंदर सुंदर लग रही हैं। वो हमारी सिमी जी हो, सेरा बानो जी हो, फातिमा जी हो, और जितने भी है यहाँ मुझे देख पा रही हूँ मैं, पूर्णिमा जी, प्रीति जी, और जो अभी अनीता दीदी आई थी वो सब। तो लिली, गेंदा, अरहुल और गुलाब उद्यान में लग रहे हैं सबके सब लाजवाब। कभी ईश्वर के चरणों में, कभी पार्थिव शरीर पर, कभी ईश्वर के चरणों में, कभी पार्थिव शरीर पर अपना अर्पित किया है जीवन, अपना अर्पित किया है जीवन। देख कर माली की मेहनत हर कोई करे गहन अध्ययन, देख कर इस माली की मेहनत हर कोई करे गहन अध्ययन। दिल में कोई ख्वाब पले तो, दिल में कोई ख्वाब पले तो पूरा करते हैं उसको भगवान। दिल में कोई ख्वाब पले तो पूरा करते हैं उसको भगवान। प्यारे प्यारे सब फूल यहाँ हैं, प्यारे प्यारे सब फूल यहाँ हैं, जैसे इकट्ठा यहाँ सारा जहां है। सब पूरे चुन चुन के सारे जहां से हम लोग लगभग बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो उसको ध्यान में रख के मैं ये लिखी थी। प्यारे प्यारे सब फूल यहाँ हैं, जैसे इकट्ठा यहाँ सारा जहां है। दो बागबां की अकथ मेहनत, दो बागबां की अकथ मेहनत, महक रहा है पीएलजी का चमन, महक रहा है पीएलजी का चमन। नित रचनाओं की माला बनाकर, नित रचनाओं की माला बनाकर, अलग अलग विषयों में उसे सजाकर, अलग अलग विषयों में उसे सजाकर, अपनी सार्थकता दिखाने की सब कर रहे जतन। साहित्य और संस्कृति की जहां बह रही धारा, ऐसी चल रही आज यहाँ पवन। साहित्य और संस्कृति की जहां चल रही धारा, ऐसी चल रही आज यहाँ पवन। आत्मीयता की यहाँ वर्षा होती, आत्मीयता की यहाँ रोज ही वर्षा होती। महफिल साहित्य की है सजती, महफिल साहित्य की है सजती। ऋतुओं की तरह विषय बदल बदल कर, ऋतुओं की तरह विषय बदल बदल कर, महकाते हम अपना पीएलजी का आंगन, महकाते हम अपना पीएलजी का आंगन। ऐसा है हमारा पीएलजी का चमन, ऐसा है हमारा बागवां का मन। धन्यवाद। वाह, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी वाह अर्चना जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी कविता से हमें ये भी मैसेज मिलता है कि हमारे जीवन में फूलों का बहुत गहरा संबंध होता है। यह सिर्फ खुशियों और सजावट तक ही सीमित नहीं है, यह ईश्वर के चरणों में भी रखे जाते हैं और पार्थिव शरीर पर भी। वाओ, सो नाइस, आई लाइक दिस कंसेप्ट। और सच कहा आपने, कविता में महक रही है आज पीएलजी का चमन। सच में आज पीएलजी का चमन बहुत महक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और आपने ये कहा कि जिस तरह माला में फूल पिरोए जाते हैं, उसी तरह पीएलजी में अलग अलग विषयों पर बड़े जतन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। वंडरफुल। और इस तरह साहित्य और संस्कृति की पीएलजी में बहती रहे धारा। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी फॉर योर सो मेनी गुड विशेस। आपकी शुभकामनाएं जो पीएलजी के साथ है। थैंक यू, आई लव्ड योर पोयम, इट वाज ऑसम मैम। एंड बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, आई जस्ट वांट टू से कि मुझे ये फूलों की थीम जो है, जो अपने पीएलजी के मेंबर्स ने रखी है, वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि कुछ सालों पहले लेडीज अपने फूलों में बाल और गजरा लगाया करती थी, बट नाउ इट्स लाइक you know, we are just into straightening, highlighting, rebonding, ये जो भी modern methods है of beautifying our hair, we generally do that only। पर आज PLG के मंच पर ये पुरानी स्टाइल जो है
बालों में फूल और गजरा लगाने की, it got revived. Very good. So thank you Simmi ji. वाह, कितना अच्छा बोला आपने, वाह कि पुराने को आपने नए से जोड़ दिया और बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। I know ma'am, thank you ma'am. और अब हम बढ़ते हैं Mrs. Fatima, Bubbly, we can see Bubbly Ja on screen, Bani Ja. Can we take her as our second poet whom we missed? Yes ma'am, definitely we will take her because she had some audio issues. So yes, we will take her. Okay, so I'll just say a few things about Bani Jha. Okay ma'am. बबली झा बानी इज फ्रॉम नई दिल्ली, न्यू दिल्ली से है वो। बानी जी ने हिंदी में साझा संकलन में दिल चाहता है, स्वयं की पुकार, काव्य पद, गजल संग्रह लिख चुकी है। बानी एक पत्रिका मैथिली में भी लिख चुकी है, उनका नाम है मैथिली और एक स्मारिका। लगभग सब विधि में लिख चुकी है। So let's welcome Bani ji on screen. Bani ji, ma'am, are you there? Yes. नमस्कार। हाँ, अब देख पा रही है मुझे? जी जी, देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। See you and hear you. हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आ तो गई थी लेकिन मैं किसी का सुन नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी इसके लिए। एलपी अब शुरू करूं? जी, धन्यवाद। पीएलजी के सभी सदस्य को मेरा प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। मैं बबली झा बानी आप लोग के समक्ष फिर से दूसरी बार उपस्थित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। तो मैं अपने एक मुक्तक से शुरू करूंगी। तो ये है, रोशन कर दे जो मुस्तकबिल ओ आफताब हूँ मैं, रोशन कर दे जो मुस्तकबिल ओ आफताब हूँ मैं, खूबसूरत एहसास हूँ तेरा मुकम्मल ख्वाब हूँ मैं, खूबसूरत एहसास हूँ तेरा मुकम्मल ख्वाब हूँ मैं, महका दे जो गुलिस्तां अपनी महक से दिलबर, महका दे जो गुलिस्तां अपनी महक से दिलबर, कांटों के बीच बीच जो खिलता रहे वो गुलाब हूँ मैं। और अपनी गजल सुना रही हूँ आप लोगों को एक। तेरे इश्क के सामियाने तले बैठी हूँ दुल्हन की तरह, तेरे इश्क के सामियाने तले बैठी हूँ दुल्हन की तरह, बदरा बन बरसूंगी तुझ पर दिलबर सावन की तरह, बदरा बन बरसूंगी तुझ पर दिलबर सावन की तरह। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मेरे महकते गुलशन के बेशकीमती गुलाब हो तुम, मेरे महकते गुलशन के बेशकीमती गुलाब हो तुम, मेरी जिंदगी में आए हो हमदम तुम साजन की तरह, इस गुस्ताख दिल को बस है तेरे दीदार की ख्वाहिश, इस गुस्ताख दिल को बस है तेरे दीदार की ख्वाहिश, हसीन ख्वाब सजा बैठा है पागल, हसीन ख्वाब सजा बैठा है पागल गुलशन की तरह, दिल शायद धड़कना भूल जाए जब मुखातिब होंगे हम, दिल शायद धड़कना भूल जाए जब मुखातिब होंगे हम, हसीन ख्वाबों से लिपट के चहकूंगी मधुवन की तरह। धन्यवाद। अपने मिलन की बेला होगी सबसे हसीन ए मेरे सरताज, बस तेरे आंखों में देखूंगी अपना अक्स, बस तेरे आंखों में देखूंगी अपना अक्स दर्पण की तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। रूह में बस गए हो तुम इश्क में की गई इबादत के जैसे, रूह में बस गए हो तुम इश्क में की गई इबादत के जैसे, छीन लाऊंगी रब से, छीन लाऊंगी रब से बसा लूंगी सांसों में धड़कन की तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मेरे अंजुमन से भला जाओगे दिलबर तुम कैसे, मेरे अंजुमन से भला अब जाओगे दिलबर तुम कैसे, बानी नैनों में छुपा रखी है सनम तुझे अंजन की तरह, नैनों में छुपा रखी है सनम अंजन की तरह। बस इतना सही है। आप लोग बोले तो और एक सुनाओ।
If we do not have time restriction, Sherbanu ji and Simmi ji, what do you say? It's up to you. हम थोड़े से लेट हो जाएंगे क्योंकि कोई नहीं ठीक है, मैं वैसे अगली दफा सुन लेंगे। दिल तो चाह रहा है कि सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त का तकाजा है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाया बानी जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। यस बानी जी, आपकी ये कविता बहुत अच्छी थी। एक प्रेम गजल थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेपनाह मोहब्बत और गहरे प्यार की एक प्रतीक है। Lovely ma'am, really liked it. And I love the way you ended your ghazal. I love the way you ended when you said, Bani, नैनों में छुपा रखी है सनम तुझे अंजन की तरह। वाह, you ended with your name so good. Something so very nice ma'am, very nice. तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थैंक यू मैम। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर, एंड शी इज रुचि जैन। रुचि जी इज फ्रॉम गाजियाबाद, न्यू दिल्ली। रुचि जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम किया है। एट प्रेजेंट वो एक हाउसवाइफ है और उन्हें लिखने का बड़ा शौक है। वो कविता, संस्मरण, कहानी और उपन्यास लिखती है। उन्हें पढ़ना और स्केचिंग पसंद है। रुचि जी एक ब्लॉगर भी है और रुचि जी की लेखन उपलब्धियां कुछ इस तरह है। रुचि जी STV हरियाणा न्यूज चैनल पर काव्य गोष्ठी प्रसारण में सहभागिता है। पुस्तक प्रकाशन है उनकी अनजान कलम, यादें, वीर गाथा इत्यादि। ई पत्रिका में रचना प्रकाशित है Amazon Kindle पर। सो यह उनकी सब अचीवमेंट्स है। सो लेट्स वेलकम रुचि जैन इन आवर इवेंट टुडे। मैम, आर यू देयर? यस जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम स्नेह जी के लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगी और उसके बाद आप सभी मेरे वरिष्ठ जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मंच को प्रणाम। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आपके कुछ पल चुराऊंगी, फिर दिल चुराया है नहीं आप मुझे बाद में बता दीजिएगा, ठीक है। और एक गजल कहूंगी उससे पहले, क्योंकि आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता है जिसमें एक औरत की सुंदरता और उसका वर्णन तीनों ऋतुओं के रूप में किया गया है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के लिए। आप प्लीज सुनिएगा। सावन की बरसती फुहारों में उगती कोयलिया की आवाज के साथ अमुआ की पेड़ के डाली के तले खिलखिलाकर तेरा वो मुस्कुराना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात। जब तू ओढ़ लेती है सर पर दुपट्टा शरद में और दुपक जाती है सकुचा की मेरी बाहों में, तेरी ठंड से लाल हुई नाक और गालों का गुलाबीपन और तेरा वो उंगलियों से उंगलियों को दबाना मुझे अच्छा लगता है। फूल झरने लगते हैं और नई कोपले फूट पड़ती हैं, प्रेम डोर बंधती है और अनकही चाहते मन में जगती हैं। लहर लहा उठते हैं खेत, नदियां खिलखिलाती हैं, चहचहाती है चिड़िया और बसंत की हरियाली छा जाती है। तब तेरा पैरों में पैजनिया बांधकर यूं थिरकना मुझे अच्छा लगता है। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है, सूरज की गर्मी में तेरा टपकता पसीना सुखाना, तेरे चेहरे की वो थकन और तेरा वो पल्लू हिलाना, तेरा वो भीगा बदन और तेरी वो खामोशी में खो जाता हूं मैं तेरी बिखरी जुल्फों में। तब तेरा यूं मुस्कुराना और मेरे संग अपना हर पल बिताना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तेरे संग प्रेम डोर में बंध जाना मुझे अच्छा लगता है। ये एक छोटी सी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। एक गजल कहूंगी, सुनिएगा। जिंदगी अच्छी नहीं इकरार होना चाहिए, हुस्न तो नश्वर है दिल से प्यार होना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छी नहीं चांद तारों से सजी ये रात है कितनी हंसी, चांद तारों से सजी ये रात है कितनी हंसी, जल उठे जुगनू भी वो अंधियार होना चाहिए,
दिल बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। की नहीं इकरार होना चाहिए, हुस्न तो नश्वर है दिल से प्यार होना चाहिए, दिल लगी फूल सी थी जिंदगी, कांटे बिछे संग इस कदर, फूल सी थी जिंदगी, कांटे बिछे संग इस कदर, मोम सा दिल टूट कर अब खार होना चाहिए, दिल लगी अच्छी नहीं किरार होना चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत बढ़िया। नशे है दिल से प्यार होना चाहिए। अगला शेर सुनिएगा। थैंक यू। जल उठूंगा साथ तेरे मैं फना हो जाऊंगा, जल उठूंगा साथ तेरे मैं फना हो जाऊंगा, बस क्षमा परवानी जैसा प्यार होना चाहिए, दिल लगी अच्छी नहीं इकरार होना चाहिए, हुस्न तो नश्वर है दिल से प्यार होना चाहिए। और ये अंतिम मक्ता सुनिएगा, ये सभी के लिए की जो एक अभी कही थी ना बात की स्नेही जी का ही एक हमारे पास अभी अनुपम मैम ने बताया था कि उम्र कोई सीमा नहीं होती है, हर उम्र में प्यार होना चाहिए। उम्र अब ढलने लगी, उम्र अब ढलने लगी, चाहत हुई पूरी नहीं, उम्र अब ढलने लगी, चाहत हुई पूरी नहीं, प्यार का रुचि हर चमन गुलजार होना चाहिए, वाह वाह, बहुत सुंदर, लगी बढ़िया। अच्छी नहीं इकरार होना चाहिए, हुस्न तो नश्वर है दिल से प्यार होना चाहिए, दिल लगी अच्छी बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छा बढ़िया, लगा, बहुत मजा आ अच्छा। गया। बहुत सुरीली आवाज भी है आपकी। वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रुचि जी, और आपने अब अपनी कविता में हर मौसम का जिक्र किया है, बरसता सावन, हरियाली, धूप, फूलों का झरना, और हर ऋतु में प्यार और चाहत बढ़ती जाती है, प्यार पनपता जाता है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी नाइस पोयम मैम, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज पूर्णिमा जी सिंह फ्रॉम मस्कत। पूर्णिमा जी पहले लखनऊ में थे और 18 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया। पूर्णिमा जी की स्कूल से जो तरंगीन मैगजीन पब्लिश होती है, हर साल वो कुछ कविताएं और कहानियां लिखकर अपना योगदान देती है। पूर्णिमा जी ने एम्बेसी के प्रोग्राम में भाग लिया था, वहां उसे एम्बेसडर द्वारा सर्टिफिकेट और मोमेंटो प्राप्त हुआ। पूर्णिमा जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और बीएड किया है। पूर्णिमा जी को लिखने का बहुत शौक है, वह कहानियां, गजल और कविताएं लिखती है। पूर्णिमा जी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सतत योगदान दे रही है। सो लेट्स वेलकम पूर्णिमा जी ऑन आवर इवेंट। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, फातिमा जी। धन्यवाद जी। थैंक यू मैम, धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी कवित्रियों को, फूलों को, कलियों को, सबको नमन करती हूँ। बड़ा ही सुंदर शेरे बानो जी, बड़ा ही सुंदर गुलशन सजा के रखा है आज आपने। मुझे पता है आपको भी फूलों से बहुत प्यार है और विषय भी आपने वही लिया है। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने विषय पर आ जाती हूँ। एक छोटी सी नज्म लिखी है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत दिनों से नहीं लिख रही थी और पता नहीं कैसी है, अब आप ही लोग तय करिएगा कैसी है। आप गाकर सुना दीजिए। जी जी। और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं गजरे में, शायद
हीरोइन लग रही है बिल्कुल सिमी जी, गजरा वजरा लगा के बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ एक छोटी सी नज़्म। शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, मेरे दिलबर चमन में चले आए हैं। ओ गुलों देख कर उनको जलना नहीं, ओ गुलों देख कर उनको जलना नहीं, साथ अपने वो रश के चमन लाए हैं। वाह, ओ गुलों देख कर उनको जलना नहीं, साथ अपने वो रश के चमन लाए हैं। शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, मेरे दिलबर चमन में चले आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आज रोमांटिक नगमों और गीतों का दौर है, तो मैंने भी एक रोमांटिक नज्म लिखी है। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। आज भंवरों की गुनगुन पुरानी लगी, मुझको साजन की धुन ही सुहानी लगी। वाह वाह। आज भंवरों की गुनगुन पुरानी लगी, मुझको साजन की धुन ही सुहानी लगी। राग मेघों का मन को भी भाया नहीं, राग मेघों का मन को भी भाया नहीं, प्रेम का गीत गुलशन में ले आए हैं, प्रेम का गीत गुलशन में ले आए हैं। शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, मेरे दिलबर चमन में चले आए हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। है हवाओं में खुशबू जो फैली हुई, इत्र गुल सा रहा है फिजाओं में जो, है हवाओं में खुशबू जो फैली हुई, इत्र गुल सा रहा है फिजाओं में जो। ऐसा लगता है फूलों में ढल के सभी, ऐसा लगता है फूलों में ढल के सभी, ख्वाब मेरे ही बंठन चले आए। वाह वाह, बहुत सुंदर पूर्णिमा जी, ऐसा बहुत लगता बढ़िया। है फूलों में ढल के सभी, ऐसा लगता है फूलों में ढल के सभी, ख्वाब मेरे ही बंठन चले आए हैं। शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, तेरे दिलबर चमन में चले आए हैं। और अंतिम पंक्ति है इस नज्म की। फूल ही फूल खिलते नजर आते हैं, पत्ते पत्ते की रंगत है बदली हुई, फूल ही फूल खिलते नजर आते हैं, पत्ते पत्ते की रंगत है बदली हुई। और अंतिम पंक्ति पर आप सभी का ध्यान चाहूंगी। तितलियों ने कहा कान में फूल के, तितलियों ने कहा कान में फूल के, चांद लेके जमी पे गगन आए हैं। तितलियों ने कहा, मजा आ गया, बहुत सुंदर पूर्णिमा। तितलियों ने कहा कान में फूल के, चांद लेके जमी पे गगन आए हैं, चांद लेके जमी पे गगन आए हैं। शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, शोक कलियों दिलों को संभालो जरा, मेरे दिलबर चमन में चले आए हैं। ओ गुलों देख कर उनको जलना नहीं, ओ गुलों देख कर उनको जलना नहीं, साथ अपने वो रश के चमन लाए हैं, साथ अपने वो रश के चमन लाए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पूर्णिमा जी, हमेशा हमको निःशब्द में देती रहती गजल, मन मोह लेती है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग की दुआएं।
और उन्होंने स्पेशली Very इस nice. थीम पे ये गजल लिखी है। कोशिश की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Very nice. Lovely. Enjoyed this. थैंक यू। फूल होते ही इतने खूबसूरत और प्लेजेंट के हमारे इमोशंस वर्ड्स आपको आप आ जाते हैं। सो वेरी नाइस इट वाज। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर, एंड शी इज स्मिता चौधरी फ्रॉम ताशकंद, उज्बेकिस्तान। स्मिता जी को कविता लिखने का शौक है। वह स्टेट लेवल पर बास्केटबॉल खेल चुकी है और वह उज्बेकिस्तान ताशकंद में फुटबॉल कोच है। ड्राइविंग करना, खाना बनाना, यस वो उज्बेकिस्तान ताशकंद में फुटबॉल कोच है। उनको ड्राइविंग करना, खाना बनाना बहुत पसंद है। स्मिता जी 16 साल से रशिया मॉस्को में रह चुकी है और अब वह 3 साल से ताशकंद में रह रही है। स्मिता जी अध्यक्ष है उज्बेकिस्तान ताशकंद महिला काव्य मंच की। स्मिता जी इंग्लिश, रशियन और थोड़ी बहुत उज्बेक भाषा भी जानती है। सो लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर ऑफ इन आवर PLG इवेंट, स्मिता जी। मैम आर यू देयर? धन्यवाद फातिमा जी। सर्वप्रथम मैं इस धन्यवाद नमन करती हूँ, PLG मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय सिम्मी जी, तुफेल सर, किरण जी, किंगर जी को सादर प्रणाम और मंच पर आए सभी कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। जब मैम ने मुझे कहा कि फूल पर कुछ कविता लिखना है, बोलना है, तो मेरे दिमाग में बस यूं ही कुछ आया और मैं लिख दी। तो देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। एक आंगन में एक फूल आई, एक आंगन में एक फूल आई, जिसे कहते हैं हम माई। उनको तुलसी जी के चरणों में सजाया, वह फूल और तुलसी जी ने मिलकर बदल दी घर की काया। बहुत प्यार से उस आंगन को सजाया, बहुत प्यार से उस घर आंगन को सजाया। उस फूल की बीज से उस आंगन में प्यार रूपी एक पौधा आया। उस पौधे में रिश्तेदार रूपी पत्तियां आई। वह पौधा कुछ समय बाद फिर पेड़ बन गया। उस पेड़ में एक एक करके 3 कली खिली। वह कली धीरे धीरे फूल बनी। फूल खिले, एक पीले और 2 लाल खिले। कुछ समय बाद पीला फूल पूरी तरह से खिल गई। पीले की हाथ पीले किए, पीले की हाथ पीले किए। 2 लाल फूल और वह पेड़ पत्तियों से पीला फूल हो गई अलग। 2 लाल फूल और 2 लाल फूल भाई हो गया उस पीली फूल का, और पेड़ पत्तियां रिश्तेदार मम्मी पापा हो गए। से पीला फूल अलग हो गई। अलग होकर वह दूसरी बगिया में आ गई। उस फूल को तुलसी जी के चरणों में सजाया गया। उस पीले फूल को मंदिर में बैठाया। इतना प्यार सम्मान देखकर वह फूल अपनी नई बगिया में रम गई। नई दुनिया में खुश रहने लगी। फिर उस बगिया को बहुत प्यार से सजाया। उस फूल से फिर एक पौधा बना। इस पौधे ने बगिया रूपी परिवार को प्यार से सींचा। पौधे ने मंदिर रूपी बगिया में फिर से 2 फूल खिले। इस बार उस बगिया में दोनों फूल थे पीले। प्यार से सींचकर इस बगिया में जो 2 फूल खिले, उनको प्यार से पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, उन्हें स्वस्थ रखना, दुनिया की हर संकटों से बचाना। अगर फूल पौधे से अलग हो जाए तो अपनी रक्षा करना, यह सिखाने का काम वह पीली फूल से बनी पौधे ने शुरू कर दिया। हर बगिया में फूल खिले, पीली खिले या लाल खिले,
ना खिले तो ले आओ बाजार से, घर को सजाओ पीले और लाल फूल से। फूल तो फूल होते हैं, घर को हमेशा खुशबू से गमगमाते महकाते ही हैं। पीले फूल, पीले लाल फूल रूपी बच्चों की किलकारियां से घर सदा हमारी बने रहे, चहचहाते रहे। बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छे भाव। बहुत अच्छा कहा आपने पीले और लाल फूल के बारे में। That was awesome. Very nice. Very nice, स्मिता जी। हम हर तरह के जज्बात यानी इमोशंस फूलों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सच है, हमारा घर परिवार भी फूलों की बगिया की तरह महकता है। और मुझे आपके पोएम की ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि अगर फूल पौधे से अलग हो जाए तो अपनी खुद रक्षा करना, यह सिखाने का काम किया पौधे ने। Which really means कि हमें हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, परवरिश होनी चाहिए, खुद अपनी रक्षा करना सिखाना चाहिए। So that's a wonderful message. और सही है कि जैसे पेड़ पौधे का जो सफर है, उसी तरह हमारे जीवन का भी सफर है और हमारा घर परिवार भी ऐसे ही बढ़ता है। So that was a lovely poem, स्मिता जी. We all enjoyed listening to it. तो अब हम बढ़ते हैं हमारे next participant की ओर. So but I'm not sure if she's there on the screen. विभा जी, विभा तिवारी। फातिमा जी, विभा जी को जुड़ने में थोड़ा सा वक्त है, तो आप बनी रहिए हमारे साथ। एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल एंकरिंग। आज आप ना होती तो हमारा गुलशन आपके बिना अधूरा रह जाता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा संचालन। Thank you, ma'am. I'm privileged. Thank you so much for giving me this opportunity. I love to perform on PLG platforms. Thank you, ma'am. Thank you so much, Fatima. Do be logged in for our next poet, Vibha Tiwari. She is missing on screen right now. और it was wonderful. आप सबको सुना, हमने बहुत प्यारा लगा और वाकई ये आज की महफिल तो बिल्कुल रोशन और महक गई है आज की महफिल। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेकेंड हाफ की तरफ, जिसमें हमारे बहुत सारे इंग्लिश पोएट्स काफी और कंट्रीज से जुड़े हैं और उनको ले चलेंगी आज की हमारी होस्ट पूजा संचेती। पूजा संचेती के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये फिलहाल मस्कत में रहती है लेकिन है न्यू दिल्ली से। एंड शी इज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। She enjoys expressing her emotions through writing and painting. She started writing poetry at the age of 15, both in Hindi and English. And according to her, it helped her find her true being and probably sharpened her sensibilities. She's a lecturer at Sultan Qaboos University. She likes to participate in projects and initiatives that help her pay back the society in a very positive way. And she believes that creativity has no specific definition. In fact, it's all about individual observation and expression. Creativity can inspire and take inspiration, but cannot be boxed. Well said, Pooja. I love what you wrote. She has judged several English poetry and impromptu competitions held in Indian school around Muscat. She's also a committed researcher in the field of English language teaching and has presented and published her research at variety of international platforms. And presently, she's also an IELTS examiner. So, Pooja, we welcome you in this lovely garden of PLG where you'll find blooming flowers of different kinds. So the poets are yours, the flowers are yours. It's all my pleasure, Sherevanoji. It's a lovely opportunity that you have, entrusted me with. So I just hope I can do justice to this trust and, at least live up to what Fatma ji has left. She's actually set the bar quite high for all of us. So good evening, everyone. Once again, a warm welcome to our chief guest, members of the organizing committee of Poetry and Literary Group, all the participating poets and the lovely audience that we have around us today. The theme of today's Ladies Special event, as we all know, is flowers. Flowers, you would agree, are an essential part of our life. And I just don't mean scientifically, as in the concept of biodiversity or the ecosystem. I mean at a humane level, where they help us emote and tickle all our senses.
Mostly the sight and smell. However, emotionally, I think they could touch the deepest chords. Some even have a strong cultural significance. And, you know, we all have seen that for centuries, poets have used floral imagery and symbolism to reach out to their readers for a multi-layered connect. I'm sure we are all now eager to listen to our poetesses here who are joining us from various parts of the small world and, you know, bringing forth their best flowers from their bouquet. So let's get ready for the flower shower. But before we start, I'd like to make a few reminders, you know, just for everybody's knowledge, for reference, and also to make sure that the program runs smoothly. First, participants, please keep your mics muted while the presenter is speaking, because sometimes when the voice echoes, it can disturb the flow. But if you like to make a short comment, you are allowed to. But if you have anything more than a short comment to say, please use the chat box. You know, we encourage you to use the chat box to appreciate all your fellow participants and encourage them. I'd also request the participants to please keep to the time limit, as we are running on a very tight schedule. The time limit is actually 5 minutes per participant, you know, plus or minus a few seconds. We are that generous, no worries. And if I'm required to interrupt because somebody's exceeding the allocated time, please do not take it otherwise. It's just to make sure that things run smoothly. Okay. So now, without further ado, I'd like to welcome our first poetess in this session of the second half, Dr. Poonam Grover. Dr. Poonam works on the principles of being positive, sensitive, and grateful in life. She's been practicing medicine for the last 33 years. She loves nature and does a lot of social work too. Currently, she's the chairperson of the Inner Wheel Club in Hapur, secretary of the Hapur Menopausal Society, coordinator of Punjabi Sabha Hapur, vice person of Kavya Deep Society in Hapur, and the state minister for Jai Bharat Manch. She has also widely published her literary work in Hindi and English and received accolades, especially by the Uttar Pradesh state government for her work in the area of women's education and safety. It's an honor, Dr. Poonam, for us to have you among us. The floor is all yours. We welcome you. Dr. Poonam? Pooja, I think Dr. Poonam Grover is logged in, but we cannot see her. So I think we will... Should we proceed to the participant? Yeah, we'll call our next poet till we see her on screen. No worries. So the next person in line is Miss Ranjana Majumdar. Ranjana teaches English to UPSC exam candidates aspiring to join the Indian Armed Forces. She's a multi-talented person, very keen on handicrafts. She makes fancy candles, does hand embroidery, makes aluminum murals, fabric painting, among many other creative expressions. For the last few months, she has been working as a radio jockey as well. She loves singing and dancing and has traveled extensively, which I'm sure must be reflecting in her work as well. She writes poetry and short stories and performs in live shows. She has published 2 solo books and 5 anthologies. She takes inspiration from the famous poet William Wordsworth, a wordsmith par excellence, and finds jasmine flower most captivating in its beauty and fragrance. She holds the memory of the harshingar flower that she grew up admiring as a child. In her words, in the morning, we would see a white and yellow carpet of flowers, and I wanted to sleep on that carpet. What a wonderful imagery, Ranjana ji. Mesmerizing indeed. We'd really like to listen to what else you have to share with us through your poem, Flowers. So let us all welcome Ranjana Majumdar. Hello, everybody. It's a good evening, fragrant, then colorful
and beautiful beauty is here. Every kind of beauty, every kind of color, every kind of fragrance we are getting here. And I feel that I should first of all pay my homage to Snehaji, and then my gratitude to the organizers and all the people who are sitting here to jailify me. So that's it. And with that, I start my poem that has a title. Actually, title is Flowers. So the sun-kissed blooms, mesmerized me in the garden, pristine, luxurious, petite, and thorns sat like wardens, uplifted petals, wearing golden corsage of fragrance, dreamy grandeur, and fantasia, weaving an enchantment, soft and creamy. The orchard becomes ornamental, magnificent darling of nature blushing, captivating the hearts of beholder, complementing to the exotic hushing. Distinctive in their designated cluster, designed cluster, or elegant in the soul expressive power, floral festivities spin an idyllic web. Casting romantic, ravishing shower. Nestled in blooms are messages of Eden. Celebration of paradise, breathtaking. Bountiful is kaleidoscope of friendship. Mosaic rainbow of life, celebrating. So that's my short poem. Very nice. Beautiful. Very, very nice. Oh, I just loved the words you used. Kaleidoscope, mosaic. Really, we are similarly like that only. It's a mosaic of all poets and a kaleidoscope of all colorful poets. Not only that, when you go and see the flowers, the garden, it's kind of that only. Yes, amazing, Ranjana ji. Loved the way you used the literary devices, your metaphors and similes and comparing, our protectors to, thorns to wardens that protect us, protect the flowers in turn, protecting all of us in the garden. Amazing, wonderful. And as Sherebanuji said, we're all here as a mosaic, a kaleidoscope, of colors, of fragrances, of luxurious flowers, as you said, velvety and creamy. Brilliant, brilliant. Thank you so much for sharing your wonderful thoughts with us here. I wanted to add that I really thank you, Ranjani, for your beautiful poem. I love the way you talked about magnificent darling of nature. That was so much love that nature gives. And I love the way you talked about the elegancy. And I really felt the elegancy of nature that speaks without words. And really, it was enough to capture our hearts. Thank you. Thank you for sharing. Thank you, Sari. Ranjana ji, I like to add one point. You have started your speech was telling this word, you have to jellifying me. We are actually enjoying your whole recitation. We were really enjoying it. Thank you. Thank you. Actually, I purposefully use that word and kind of Hindi and English mixed.
Amazing. Thank you. Pooja, Yes. Pooja, we will welcome our chief guest, Nasra Al-Adawi, who has joined us. We have with us today our chief guest as Nasra Al-Adawi. She's a very distinguished personality in Muscat, and I'm so glad. I really thank her from the bottom of my heart that she has accepted our invitation and is with here, all of us today. Welcome to our program, Nasra Al-Adawi. Let me introduce you to her with a few lines. She's actually based in Middle East, and her passion for poetry began in a very early age. She used to write in Arabic first, and then she switched on to English. And since childhood, poetry has given her a lot of solace. Why? Is because there were a lot of family tensions, and there was separation in the family, divorce, parents were living in different countries. And so poetry became a source of healing for her. And Nasra lost her father at a very young age due to cancer later, and it helped her to find solace in poetry. And thereon she advanced to write 3 books of poetry, and also she contributed in creating a general awareness about cancer in Oman and Tanzania. So later on, she was in a pursuit of a purpose, which led her to experimentation, coaching, personality assessment, public speaking. And then she found an organization which is known as IA Poetry. So she enrolled herself as a poetry therapist practitioner. And she went on to get a training for a professional qualification. And she realized that this way she can contribute to individuals in society. So she undergone a training, which is known as the PTP training. And she's associated with that group, which is known as Healing Pen. And it is in cooperation with Serene Muscat, which is a mental wellness clinic in Oman. So let's all of us welcome with a virtual e-clap for Nasra Al-Adawi. Thank you so much. I'm actually today your guest, so I would love. I'm enjoying the first recital, and thank you for the invitation. I'm really honored to be with you tonight, and what a day to actually join. Whereas flowers and nature is spoken, and nature is amazing metaphor for our soul, for our cleansing, for cleansing of our body, and heal our hearts when there's, sadness. So when you walk through nature, all the sadness and all the, bitterness, it opens a new page. So I'm glad I came in this day. So I'm your guest today, so I would love to hear your poetry. Unfortunately, I was not able to join you earlier because I'm still learning Hindi. So I think I need a better teacher for that. So hopefully next time I could join you with that as well, inshallah. Nasra Al-Adawi, we will invite you over for your poetry after a few poets, and we shall come back to you again to hear your lovely recitation. Thank you. Over to Pooja. Thank you, Sharabanuji. Okay, so we'll now be moving on to our next poetess in line, which is Miss Samina Namoji. Samina ji hails from Karnataka for arts, painting, and everything creative. She writes stories and enjoys DIY crafting as well. She doesn't miss an opportunity to learn and share new things. She has grown up listening to the famous Indian poet Gulzar Sahib and connects to his words intently. At a personal level, tulips are her favorite flowers as they signal the arrival of spring, a season of happiness and rejuvenation. She too has a perky and upbeat personality of a tulip. So let us see which facet of her personality she brings forth today to share with us. We are delighted to have you amongst us, Samina ji. Most welcome. The floor is all yours now. Thank you so much, Pooja ji. First of all, आप म्यूट हैं. Unmute yourself, Samina. Sorry, am
audible now? Yeah, yeah. Thank Yes. you so much, Pooja ji. And first of all, a very warm welcome to everybody who's present over here. And secondly, I would like to thank PLG for giving me yet another opportunity to share a few of my poems. And thank you so much, Simi ji and Shere Banu ji, for motivating me always. Also, one small thank you I would like to add to Ranjana ji, because she's been a wonderful mentor. Every time I ask her for tips, she's always ready, and she makes it a point to hone me properly in the way that I can speak, and I'm confident that this poem is really good. So today my poem is based on memories, and it is in Hindi, so I'm sorry, Nasra ji. So the thing is, जैसे गुलजार साहब ने खूब कहा है, थम के रह जाती है जिंदगी जब जम के बरसती हैं पुरानी यादें। यादें जैसी भी हो, खट्टी हो, मीठी हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो हमारे जिंदगी के आंगन में फूलों की तरह महकती रहती हैं। वो हमें, जब हम बुरे टाइम का सामना करते हैं, तो वो हमें एक प्रोत्साहन देती है कि उन यादों को याद करके हम आगे बढ़ें। तो इसी विषय पे मेरी छोटी सी पोएम यादों को लेके। कौन कहता है कि तुम नहीं हो, तुम साथ ना होकर भी साथी तो हो। तारों की चादर ओढ़े हुए हर एक रात दम से तुम्हारे, बरसती हुई बारिश की पहली बूंद भी दम से तुम्हारे। गरम गरम चाय की चुस्की में भी तुम, सर्दी में लुका छुपी खेलती हुई धूप में भी तुम, पत्तों से लिपटी हुई ओस की मोतियों में तुम हो। यादों की सिहाई से लिखे हुए दिल के हर एक पन्ने पर तुम हो। हाथों की गर्मी में, सौंधी गीली मिट्टी की नरमी में, बच्चों की मासूम से खिलकारी में, हाँ इन सब में भी तुम हो। भीड़ में भी सन्नाटा बनकर मेरे साथ में ही हो तुम, मेरे सूनेपन के हम सफर भी तो हो तुम। थैंक यू एवरीबॉडी। माशाल्लाह, बहुत ज्यादा, Strong short punch, very powerful, lovely. Wow, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। Beautiful, समीना जी, मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। आपने कहा भीड़ का सन्नाटा, मतलब ये एक छोटा सा सेंटेंस अपने आप में इतनी बड़ी बात कह गया। और मतलब इतने डीप मीनिंग वाले आपके सारे अल्फाज जो थे, उनमें इतनी गहराई थी, इतनी सच्चाई थी, और इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपने ख्यालों को व्यक्त किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। साथ ना होकर भी साथ होना, भीड़ का सन्नाटा, दिल की लुका छुपी, मतलब कोई ऐसा एहसास नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो। एक छोटी सी कविता में, एक छोटी सी नज्म में आपने बहुत सारे विचारों को लपेट लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं अगर आपने हिंदी उर्दू में कविता प्रेजेंट की, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको सुना। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में भी सुनेंगे। जी 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 जरूर। थैंक यू so much everybody. I think even the recital is I think the recital, even though I don't understand it, but there's music into it, and that's the beauty of poetry and song. So I appreciate the lyrics that comes from your words, even though I don't understand. Thank you so much. Thank you. And I so wish we had the time to, summarize it for you, Ms. Nasra, but maybe later. It was an amazing, amazing piece of writing. Thank you so much. Okay. All right, now let's take it forward to our next poetess, Danish Rizvi. Danish is a passionate and positive person. She's joining us from Bahrain, actually. She's a mother of 3 kids. While she teaches Hindi at Al Noor International School, she loves to read and write poetry and stories. She's an ex-commit member of Angel Toastmasters Club and Pratham Hindi Toastmasters Club in Bahrain. Hailing from Meerut, Uttar Pradesh, she's always ready to find her own hidden treasures. Danish takes inspiration from, again, the famous Indian poet Gulzar Sahib, and she considers herself the queen of her home. Best wishes to you, Danish ji. May it always be the case. A warm welcome to you, Danish ji. The floor is all yours now.
Yeah, thank you for such a beautiful word, and good evening to you all, and our honorable chief guest today is Nasral Adawi ji. It's my privilege to meet all of you. Usually I'm writing in Hindi, but today I tried in English. So hope all of you like it. So it's the same that today's theme is flowers. So I try to write few lines on flowers. Such beautiful things we call flowers. I can appreciate their beauty for hours and hours. Their colorful petals in different varieties. Hummingbirds love them, and so do honeybees. Flowers reproduce using pollination, making new flowers, increasing their population. Lilies and lotuses are types of flowers. The long yellow ones are called sunflowers. The beautiful scent entering our nose. My favorite one is the red one called rose. Wow. Our life can be compared to a flower. It can be good, but can switch at any hour. We have the good days where we blossom and bloom. Then we have the bad days filled with sadness and gloom. But just like a flower, you got to endure it, like how they survive the 4 seasons and flourish. There is a good lesson that roses teach you. Even a bright and beautiful rose with a thorn could hurt you. So be careful with what you pick and choose. A beautiful rose could give you a serious bruise. So never give up. Endure like a flower. Wait for the sun to come up so we can flourish and bloom. Just so we know we got the strength and the power. Life is too short to stress and worry. Enjoy it bit by bit. There is no need to hurry. So go spread positivity like a flower's beautiful scent. I hope you enjoyed my poem. This is the end. Thank you. MashaAllah, Danish Very ji. beautiful. Very You beautiful. said you were only trying to, recite in English. It was wonderful. It was like you've always recited in English. Brilliant, brilliant use of expressions. Yes, I mean, you started with the beauty of roses and you appreciated their purity of flowers, but you also touched upon the cycle of nature. And then, when you said a beautiful rose could actually give a bruise, that I felt signified the strength that women have, especially, the hidden strength that we have. If challenged, we can go to any levels. So yeah, there's no end to what we are capable of doing. Brilliant, brilliant expressions. Thank you so much for joining us. Even I loved this line a lot, Pooja. A beautiful rose can actually give a bruise. When she was reciting that, I just picked that line. Yeah, me too. And I was like, wow, it's spot on. This is what happens. We're all very delicate flowers, but then if we are tested, if our patience is tested, we can flip and just change the role. So, well, thank you. I love the way, Danish, you've talked about, of course, the beauty of the orange flower that is in your hair that reminds me of the season. But however, your writing as well spoke about the seasons. And the season that you presented was emotional seasons that we go through. So you spoke about hurt, you spoke about love, you spoke about joy, you even spoke about resilience. And these are seasons that we go through as humans. And what a way of portraying it without saying it.
in a beautiful melody of the rose and flowers. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing. Lovely, lovely, beautiful. Thank you. So moving on, I'd like to welcome our next poetess, Miss Momita Gope. She's an amateur writer and storyteller. Probably is not giving enough credit to herself, but she definitely has more than it takes. She currently lives in the United Kingdom, and we are very happy to have connected with you, Momita ji. Welcome on board. Thank you. Thank you, for you Pooja to ji, go and live. thank you, Yes. everyone. Thank Yeah, you. thank you very much. Thank you, everyone. Yeah, when Akbariji told me we need your introduction, so I was just thinking what to say about me. So there are so many things, and the entire theme of this flower, as well as my introduction, made me confused what else I have to tell about me as well as the flower, and which flower I'll actually start writing, because I love all the flowers. So it's really difficult for me to choose a flower which I like. So I write a very small poem, which from the bottom of my heart, I try to correlate with flower as well as babies. Babies are just like blooming flower, what I think. And that's what I want to connect with. I don't know how you guys will like my writing, but I'm trying to present in my ways. The name of my poem is Yellow Lilies. I am in a wood, gathering lots of woods. Woodpeckers drum, crossing many lanes and lines. Morning breeze tapping yellow lilies, touching my face. Morning dews dropping on terrain. Babies' cries make me turn right. No wonder it's their way to attract our sight. So sweet to hear babies call. It's time to get back and make babies stroll. Babies are like yellow lilies, you know, tender, colorful. How enchanting they are. They bow down with a flow of breeze, just like yellow lilies with the flow of breeze. That's lovely, 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 amazing, beautiful. Beautiful, beautiful, Momita ji. You know, you've compared your analogy of lilies and young babies is very true to what we see in life. You know, babies have so many emotions similar to all the other flowers, and they do catch our attention at different levels, you know, with their beauty, with their cry, with unwanted dew sometimes. So yeah, very well put together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I also enjoyed, you know, when you said babies are tender, enchanting, and so are flowers. So yeah, again, a very well-made connection. Thank you very much. Thank you. Momita, thank you for sharing your poem. And as the lilies you talked about, you also, you know, you had even the gown that you are wearing is yellow or orange, so it reminds us of lily. And what a beautiful recital. All this time there was a smile that takes us off the feeling of innocence of a child, as you talked about lilies. But also you've reminded us that lilies too can be naughty as children. Thank you. Thank you for this beautiful recital. Thank you. Thank you, Nasrati. All right, so moving on and inviting our next poetess, Miss Vinnie Kalia from London, who's a life and motivational coach, poet, singer, radio artist, television anchor, news reader, and a script writer. I mean, it's like, you know, she's really multi-talented. She
I don't think there's anything that she doesn't do. With a master's in Hindustani music, Vinny's poetry has been published in various magazines and newspapers. She's been giving dance and singing performances on various platforms. And she's also participated in various Kavi Sammelans. Actually, she's also been active on the beauty front. She's been crowned Miss Gorgeous in 2017 and 2019, Miss Charming in 2018, and has received Sutra Excellence Award in 2021, and again was crowned Miss Satrangi Mutiar. Mutiar, for people who do not know Punjabi, refers to young woman. Satrangi refers to, rainbow colors. So she's been crowned Satrangi Mutiar in 2022. So I'd like to welcome Vinny Kalia, our Mutiar, on board. Vinny ji. Thank you. Hello. Hi. Hello. Am I audible properly? Yeah. Yes. All right. Thank you so much, Pooja. And Simi ji, Nasral Adavi, Pooja ji, and Sherbanu ji, Fatima ji जा चुकी हैं. So, but everybody, I mean, namaskar to everyone. मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि कितने खूबसूरत फूल आज की महफिल में आए हैं. कितने खूबसूरत फूल आज की महफिल में आए हैं. ज़हे नसीब PLG 137 ने ये खूबसूरत फूल एक गुलदस्ते में सजाए हैं. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात. वाह. So today's topic is so beautiful. I must say, whosoever else, I think Sherbanu ji, Simi ji, आपने choose किया. This is such a beautiful topic, flower. It's Simi ji's idea, Simi Kumari's idea. Okay, Simi ji, it's such a beautiful topic. And I do write in English and Hindi both, but today I'm going to recite only Hindi. As yesterday, I think Pooja ji she had done this thing. She asked a question, which flower you can relate yourself to. So आज सुबह मैंने लिखा, because I had been busy in various events, even all day yesterday as well, and तो उसके बारे में, उस फूल के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में वो सोचते हुए उसको सोच के ही मैंने ये लिखा है. So flower, but मेरे थोड़ी सी जो पोएम है वो हटके है. So I hope you all will like it. So जो सवाल है आपका पूजा जी, सवाल उनका हमसे किस फूल की तरह हो तुम. सवाल उनका हमसे किस फूल की तरह हो तुम. क्या फितरत है तुम्हारी, क्या पहचान हो तुम. जवाब बस यही है. थैंक यू. जवाब बस यही है हमारा, फूलों की तरह एक फूल है हम. जवाब बस यही है हमारा, फूलों की तरह. थैंक यू. फूलों की तरह एक फूल है हम, इनकी महक ही की तरह महकते हैं हम. खूबसूरत फूलों की मानिंद खूबसूरत दिल रखते हैं हम. वाह वाह वाह, बहुत आला. सो जवाब भी बस यही है हमारा, फूलों की तरह एक फूल है हम, इनकी महक की तरह महकते हैं हम. खूबसूरत फूलों की मानिंद खूबसूरत दिल रखते हैं हम. महकते हैं फूल जैसे सारे गुलिस्तान. महकते हैं फूल जैसे सारे गुलिस्तान में. कोशिश यही हमारी, हम महकाए सारे जहां में. महकते हैं फूल जैसे महकाते हैं फूल जैसे सारे गुलिस्तान को. कोशिश यही हमारी, हम महकाए सारे जहां को. अपनी मुस्कुराहटों से, अपनेपन से, अपनी मुस्कुराहटों से, अपनेपन से, निस्वार्थ हो सबकी मदद करने से. बांट कर खुशियां सबसे, जगाकर उम्मीदें दूर करके रंजो गम से. रंग बिरंगे फूल आंखों को लुभाते हैं,
रंग बिरंगे फूल, आप सब जैसे रंग बिरंगे फूल है, रंग बिरंगे फूल आंखों को लुभाते हैं, प्रियतम प्रियतमा सब लोग तोहफे में इन्हें पाते हैं। वाह वाह, बहुत आला। शुक्रिया। रंग बिरंगे फूल आंखों को लुभाते हैं, प्रियतम प्रियतमा सब लोग तोहफे में इन्हें पाते हैं। खूबसूरत फूलों की तरह खूबसूरत रहना चाहते हैं, खिलखिलाते फूलों की तरह खिलखिलाना हम चाहते हैं। खूबसूरत फूलों की तरह हम खूबसूरत रहना चाहते हैं, खिलखिलाते फूलों की तरह हम खिलखिलाना चाहते हैं। और आखिर में मैं ये सबसे कहूंगी, और चाहते हैं आप भी यूं ही मुस्कुराते रहिए। और चाहती हैं आप भी यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुले बहारा गुलिस्तां बनाते रहिए। वाह वाह, बहुत आला। शुक्रिया। और चाहते हैं आप भी यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुले बहारा गुलिस्तां बनाते रहिए, फूलों की तारीफ में कुछ गुनगुनाते रहिए। क्या बात। और इंसानियत का और एक दूसरे के साथ निभाते रहिए। तो आखिर में मैं दोबारा ही बोलूंगी, और चाहते हैं आप भी यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुले बहारा गुलिस्तां बनाते रहिए, फूलों की तारीफ में कुछ गुनगुनाते रहिए, और इंसानियत का और एक दूसरे का साथ निभाते रहिए। थैंक यू सो मच। विनी जी, पहले तो मैं आपको एक नया क्राउन देती हूँ, मिस कंजीनियलिटी का। क्या थॉट्स है, माशाल्लाह, क्या थॉट्स है, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। शुक्रिया शुक्रिया। आप खुद भी खूबसूरत है, आपके विचार बहुत खूबसूरत है, आपका दिल बहुत खूबसूरत है। आपने आज सुबह ये लिखी, ये बहुत जी, और इतनी गहराई में लिखी, इतनी सुंदरता से लिखी कि इसका क्या, पोएम के लिए, इस कविता के लिए मैं आपकी इंस्पिरेशन बन पाई। एक मेरे सवाल ने आपको सोचने पे मजबूर किया कि फूलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी फितरत और पहचान कैसे व्यक्त की जा सकती है फूलों की ज़बानी। So thank you so much for your kind words, Pooja. And also, actually, I didn't know, I didn't have any prepared poem or something. I was just thinking what to write. Then I thought of your question. Honestly, if this is your spontaneity, who needs you to write beforehand? Stay spontaneous, stay flexible, stay, on the spot. So brilliant, brilliant. I mean, इतना खूबसूरत आपका एहसास था जब आपने कहा कि इस जहान को महका के जाना चाहेंगे, रंजो गम को मिटाना चाहेंगे। मतलब इतनी हम्बल आपकी दुआ है, और हम यही चाहेंगे कि आपकी दुआ कबूल हो और हम लोग भी, हम सभी आपकी दुआ में हमेशा शामिल रहें। Yeah, sure. Shukriya. Thank you so much. Thank you so much. I just want to add one more. I'm sorry, I'm adding bits of this, but I go with the feeling more than even words sometimes. And there was such a peacefulness when you were reading it. But what captured me as a foreign person who don't understand the language is there's a lot of similarity between the language. And you talked about surat. I think so many times you've emphasized the image. In Arabic is actually when you say the word surat, it means image or a photograph. So I'm not sure what does it mean in your poem, but it gave me the indication that there is a lot of images between the flowers. And as well, you talked about jawab, and for us in Arabic is answers. And I hope, beyond the image, there is a lot of answers within these flowers that you portrayed. Wow. Yes, just to clarify, Nasra, Khubsurat is beauty, beautiful. Nasra, you have an amazing ear for languages. You really pick on the right words, you get the gist of everything, which is brilliant in itself, really. I'm surprised actually she could make it, what I said. Yes, and that helped her understand the overall gist. So wonderful, wonderful. Thank you. Thank you for sharing
It was really lovely to hear it, even though I don't speak it, but and the feeling that, you know, the background and you are orange, oh, a beautiful color that you're wearing. So it sent us to the flowers and the nature. Thank you. Really appreciate. Thank you so much. Thank you, everyone. We'll be taking the event forward with our next poetess, Ms. Preeti Agarwal. Preeti ji is from New Delhi, India. Same pinch, ma'am. I'm also from New Delhi. I know, what a pleasure. She currently resides in Brampton, Ontario, Canada. She has a BA in Economics Honors from the famous Lady Shri Ram College, Delhi. And coming from Delhi, I know what it really means. So well done. Her interests include reading and writing in Hindi and English, listening to classical and semi-classical music, and painting. She's been living in Canada for the last 20 years, where about 3 years ago, she chanced upon the Hindi Writers Guild meet that was being held in the local library. And after meeting and hearing many eminent writers there, her journey for Hindi writing began. Her writings are very simple and based on everyday happenings and observations. This is her own account. Her poems, haikus, Lagu Kathas, which is short stories, and stories are featured in several magazines like Sahaj Sahitya, Sahitya Kunj, Hindi Chetna, TriveniLagukatha.com, Udanti, Haryana Pradeep, Vachnakar, Aryam Sahitya Ki, etc. Her artwork has also been featured several times in Sahaj Sahitya, Triveni, Hindi Haiku, etc. And on 2 occasions, her paintings were featured on the cover of a very prestigious magazine called Hindi Chetna. A true poet at heart, she takes most of her inspiration from nature and life in general. She relates best not to a flower, but to the humble grass. The grass is so dynamic, according to her, and is so low maintenance and so resilient that no matter what hardships one puts it through, it always springs back in no time. So she finds the humble grass very inspiring, with immense dignity and strength of character. What an amazing perspective, Preeti ji. I was floored. So we welcome you to share your deeper emotions with us on this platform now. Welcome once again. Pooja, for your loving and warm words. And first of all, I would like to welcome and greet Nasra ji. And I totally endorse with her doctrine that poetry is extremely healing. And it can be used as a wonderful tool, not only as a medium of composition, but also just to hear somebody recite a beautiful poetry, which has soul in it, you know. So I think it's a very beautiful medium of expression. For that matter, even paintings and any creative medium would be a fantastic opportunity to heal yourself and others. And I especially endorse poetry and painting because I took it up at a very, very troubled time in my life. I was going through a lot of personal turmoil in my life about 2-3 years back. And I just happened to go to the library and meet some poets there. And I started writing, and it really helped me keep afloat. So Nasraji's work is very, very commendable. And of course, I would also like to thank Simmi ji and Tafail Bhai and Sherebano ji for always having this beautiful platform ready for all of us and inviting us over. And just as Pooja told you that everybody has been talking about flowers and how beautiful they are, how fragrant they are. But then I sometimes think, if you imagine a garden which has just flowers, and it seems so incomplete. But if you imagine a garden with just grass and no flowers at all, I think still it would look fabulous. So I somehow always feel more inspired with the grass, simply because I tread on grass all day, all night. You know, people are getting their car tires over them. There is snow, there is storm, you name it. And they have all these hardships and challenges. And just a little water, not even that, and they'll spring back to life. So I think it's a very, very emotional and inspirational thing for me. And that's why I'm always a champion for grass.
So I had prepared my poem in Hindi. I didn't know that I was going to be on the English slot. So I'm going to continue with my Hindi poem, but next time, inshallah, I'll be reciting in English as well. So for Nasra ji's benefit, I'm just going to recite a few lines on which I say that even though the flowers are beautiful, but if given a choice, let me be the grass. So I'm going to say this in Hindi, and it goes, माना कि हुस्न फूलों का दिलकश है अजीम है, माना कि हुस्न फूलों का दिलकश है अजीम है, मुझे कुछ और जीने दो, मुझे कुछ और जीने दो, मुझे दूब ही रहने दो. So दूब is actually grass. We say दूब for grass. So माना कि हुस्न फूलों का दिलकश है अजीम है, मुझे कुछ और जीने दो, मुझे दूब ही रहने दो. क्या बात है. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. तो अभी जो आज की जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो स्नेही चंद्रा जी की पावन स्मृतियों को समर्पित है. मैं कभी उनसे मिली नहीं, ना मुझे उनकी कविता सुनने का सौभाग्य मिला क्योंकि मैं PLG में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये कविता जो है हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो जीवन जीने की कला या तो सीख रहा है या सीख चुका है या एटलीस्ट कोशिश कर रहा है. So for Nasra ji's benefit, the poem I'm going to recite now is dedicated to all those people who are trying to find better ways to live. They are always learning from other people, always trying to imbibe the finer things in life and how to live life, which is really a very simple exercise. Just live life to the fullest. Just live life the way it comes to you. So here goes my poem. कविता का शीर्षक है वो शख्स. पहेली नहीं हूँ सहेली हूँ मैं, पहेली नहीं हूँ सहेली हूँ मैं, जिंदगी हूँ हर पल नवेली हूँ मैं. पहेली नहीं हूँ सहेली हूँ मैं, जिंदगी हूँ हर पल नवेली हूँ मैं, मुझे सूझते बूझते जो रहे, मुझे सूझते बूझते जो रहे, तो पानी ढलकती हथेली हूँ मैं. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा. एक बार मिलूंगी दोबारा नहीं, एक बार मिलूंगी दोबारा नहीं, जाया मुझे यूं ही करना नहीं, जिंदगी हूँ बड़ी अनमोल हूँ मैं, जिंदगी हूँ बड़ी अनमोल हूँ मैं, ना मुझसा कोई बेजोड़ हूँ मैं. जिंदगी हूँ बड़ी अनमोल हूँ मैं, ना मुझसा कोई बेजोड़ हूँ मैं. कल का मुझे भी नहीं है पता, कल का मुझे भी नहीं है पता, न सोच में उसकी तो खुद को सता. कल का मुझे भी नहीं है पता, न सोच में उसकी तो खुद को सता. कल किसने देखा, कल किसने देखा, वो एक ख्वाब है जो है आज है बाकी बेकार है. कल किसने देखा, वो एक ख्वाब है जो है आज है बाकी बेकार है. जो मन में तेरे है तो वो कर गुजर, जो मन में तेरे है तो वो कर गुजर, चंद घड़ियां यही तो यूं कर बसर. जो मन में तेरे है तो यूं कर गुजर, चंद घड़ियां यही तो यूं कर बसर. कि हैरान हो और सभी ये कहें, कि हैरान हो और सभी ये कहें, क्या खूब था वो शख्स, कितना जिंदा था. क्या खूब था वो शख्स, कितना जिंदा था वो, जिससे मांगती थी खुद जिंदगी जिंदगी, जिससे मांगती थी खुद जिंदगी जिंदगी. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, सलामत रहिए. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Thank you, Pretty, for the lovely. Thank you, Pretty, for the lovely recital. I love your facial expression. You brought your poem from your heart. I could feel the song, even though but actually when you spoke at the beginning, you gave me the glimpse of the entry of the poem, the grass. I started having small flickers of tears because I could feel the holiness of the grass,
because it completes the flowers. And again, you show me that how resilient is grass is, and a tribute for a lot of us. We don't think of grass, we kind of belittle grass. Yes. Now you've taught me a new lesson to whenever I walk past the grass, I should actually appreciate it. Yes, Thank thank you you so so much. much. And that is exactly what I feel. I Yes. love the second poem. You talked a lot about Sahli, or I don't know how you say it. Sahli? Saheli. 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 So I was saying that life is not a mystery. It is in fact your friend. It is your Saheli. Saheli is your girlfriend. So for girls. So in Arabic for us, Sahel, it means facilitation of easiness and make it easy. So, and I felt when you were talking about it, because I was kind of embracing it from my own language, and I felt whatever you're talking, it's a path that would become easy. And the last one is you talked about Baki. And for us in Arabic is what is left or what is remaining. Yes, it is. Yeah. And I felt that is really point of resilience, because you take whatever remain and you make something out of the remain. So thank you for that, because I felt it, even though it was a bit strange in my language, but even I had these flow of languages, intermarriages of languages, and I felt it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Nasra ji. You have such a beautiful soul. प्रीति जी, मुझे भी कुछ कहना है. आपकी पहली दो पंक्तियां कि मुझे कुछ और जीने दो, मुझे डूब ही रहने दो, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे से. मुझे एक्चुअली मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैंने कहा कि मैं कभी मुझे चॉइस दी जाए कि मैं फूल बनना चाहूंगी कि घास बनना चाहूंगी, तो मैं कहूंगी नहीं मैं तो घास अच्छी. क्योंकि फूल तो सीजनल हैं, घास तो किसी सीजन पे डिपेंड नहीं करती. एग्जैक्टली. और हर सीजन को सरवाइव कर जाती है. और घास बोलते हैं कि घास पे चलने से आंख भी अच्छी हो सकती है. बिल्कुल. घास के जो फायदे हैं वो सारे फूलों के फायदे नहीं हो सकते ना. बहुत ही उम्दा ख्याल था आपका, और बहुत इतना मतलब खूबसूरती से आपने उसको प्रेजेंट किया कि क्या कहा जाए. मतलब जिंदगी बेजोड़ भी है और जिंदगी जाया भी नहीं करनी और उसको अनमोल भी समझना है, लेकिन फिर भी आज में जीना है, जितना दिली से जीना है. वो ख्याल भी बहुत कमाल का था. बहुत एंजॉय किया हम सब ने. मेरी भी एक ऐसी कविता है, जीवन एक अनसुलझी सी पहेली है, सुख दुख उतार चढ़ाव की सहेली है. बहुत सुंदर. One thing more to add कि घास के बिना फूल अच्छे भी नहीं लगते. जहाँ घास हो के अंदर फूल हो, इनकम्प्लीट है. फूलों से अगर एक बगीचे को देखें जिसमें सिर्फ फूल ही फूल है, तो वो इनकम्प्लीट है. बिल्कुल. वो पूरा नहीं है, वो साकार नहीं है जब तक कि उसमें घास ना आए. जी. और घास को जो आपने इम्पोर्टेंस दी, घास को जो तवज्जो दी, जिस डिटेल में आप गए, बहुत खूबसूरत, बहुत ही. और थैंक यू हमको कोई पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए. शुक्रिया. जी कोई ऐसे भी सोच सकता है. इट इज अ रियली वंडरफुल, ब्रिलियंट. सारे सीजन सरवाइव करते हैं. स्नो भी सरवाइव करते हैं, हीट भी सरवाइव करते हैं, ग्रास सब कुछ सरवाइव कर जाते हैं. तो मैंने एक्चुअली जस्ट अ स्मॉल दिस थिंग कि मैंने एक्चुअली यही देखा कि जब कनाडा में जब स्नो जैसे 5-6 महीने स्नो पड़ी हुई थी बिल्कुल, और उसके बाद अभी स्नो पूरी तरह से मेल्ट भी नहीं हुई थी, और उसके पीछे से नीचे से घास झांकनी शुरू हो गई थी. अरे मैंने कहा वाह भाई वाह, कमाल है. हम यहाँ पे 4-4 जैकेट्स और शॉल्स ओढ़ के निकल रहे हैं, वो कर रहे हैं, और घास को देखिए जहाँ जरा सा मौका मिल रहा है, it's ready to spring back to life. So I was so motivated and so inspired. I said, ये है, like this is a really inspiring force. आपने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि आप लाइफ की ऑब्जर्वेशन से ही अपना इंस्पिरेशन. बिल्कुल जी, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बहुत ही इंसाइटफुल थॉट्स थे. थैंक यू सो मच. अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट, आज के जो ऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ. Okay, now I have to switch back to English. Yes. So we are moving on to Sakina ji. Last but not the least, Sakina Dosaji from Tanzania. She's an educator in Tanga.
and a poet by passion. She's a privileged member of World Nations Writers Union, Kazakhstan, and has been awarded World Poetic Star for excellence in the field of literature. She has also co-authored several book anthologies, which are available on Amazon, and her work has been published in various magazines as well. She's a contributor for the Citizen newspaper. She has been awarded by Gujarat Sahitya Academy for showing literary excellence at par with global standards on India's 74th Independence Day. She has also been recognized by the government of Peru for her literary work. She takes inspiration from Rumi's poetry, who's famous Sufi poet, where she feels, every verse is like a velvety petal caressing your cheeks. Words are drenched in passion and hidden in the bosom of a book like an age-old rose between pages. Beautifully presented, Sakina ji. Couldn't wait any longer to hear you. So without further ado, I'd like you to take the stage. Thank you. Thank you very much. Good evening, everyone. Thank you for the lovely introduction. My poem is The Majesty of Flowers. Roses are so beautiful, lavish, luxurious. A dreamy fragrance that takes you to a faraway place. How it endures when it is being rained upon. Its petal tender on the cheeks, breathing of love and joy. How it unfurls and blossoms in the eventide as the glimpse of moon radiates its love. On graves, it bows and weeps, white, pink, red, petals that speak of mourning and remembrance. To the newlyweds, it adds charm and delight, vibrancy and glamour, a sacredness to the purity of union. On sandy beaches, amid sparkling aquamarine water, loosely tucked on open tresses, sprayed with salt water and surf. To a couple with newly found love, green stem sunk in pristine teeth, a long-stemmed red rose to profess eternal love, an exquisite bouquet on Valentine, perfect for picture poses. Pressed between yellow pages, dried petals that tell us a story of an age-old love, of laughter and promises. Discolored, but that, if we call by any other name, would still be a rose and smell as sweet, deeply admired and loved. Roses on my cheeks as I traverse through this life and reminisce the glorious days. Its thorns often prick, but the assurance of the velvety petals nearby comforts the heart. A fusion of flowers is what the little ones shower, a medley of lavender and white blooms, pink-lipped tulips, lily of the valley, camellia, children being like the flowers themselves, redolent, pretty, carefree, filling our world with bloom. Madly in love with roses. Tell me about you. Thank you. Wow, lovely. Amazing. Very beautiful. Very beautiful. Amazing, Sakina ji. We can all feel your love for roses and how extensively, you have thought about roses, the imagery that you have painted through your words, especially about the feelings of love and eternal bliss and, the purity of union and all the thoughts around the theme of love. So beautifully done. I really enjoyed when you started with your, dreamy fragrance. Love the way you expressed, yes, thank you little so much. details. Thank you. Yes, little details of the flower and the reassurance of the petals when one gets pricked by the thorns. So again, a reminder of the balance that nature creates. True, true. It's in life in general, when you have
ups and True. downs, when you have Yeah. highs and lows. Happiness and Similarly, sadness. yes, Yeah. in the world of flowers, if we have thought, we also have creamy, soft, luxurious petals to soothe us and to nurture the love. Thank you so much. And Thank you too. you did not miss the idea of posing with flowers as well, especially on Valentine's Day. So yeah, I think that was tongue-in-cheek kind of an expression, but brilliantly put. Thank you. Pooja, she is the queen of literary pearls in our group. Wow. Actually, Experienced the it richness in her firsthand. language. I could sense, the way she played with I'm honored. words. She was just playing with words, with emotions, and so effortlessly. That was Thank you. It was effortless. So thank you. And I'm honored that I, got to attend such a lovely event, such an eye-opener. I mean, I've been part of PLG, a silent member actually. Haven't really, I would say, made an effort from my side to participate more, but I feel so encouraged now that I should and make all the efforts in staying connected to all of you lovely people and learn from you all. Thank you so much. Thank you, Pooja. It was lovely to have us with you on the show, and you kept the zeal, the enthusiasm, and you in fact did the postmortem of most of the poetries. That's wonderful. I do, I can't stop it. I'm a teacher at heart. It happens, even if I try not to. Thank you, Pooja. Thank you, Pooja. That was really lovely, taking us through and giving us a beautiful capture inside of each poet or poetess. Really, you've given us the strength of the poetess before we even heard them. And for Sakina, thank you so much for sharing your poem. You know what I felt when I was hearing your recital? Was a lot of confidence in the flower, a lot of joy. I think your voice portrayed that feel of that flower. I think I've heard of others, but with you especially, I felt the flowers was very confident. The flower had a lot of joy, and as well a companion for our seasons of life, cycle of life that we go through as human. Thank you for sharing. Thank you so much. Lovely, amazing, lovely. Before we move on to Vibhaji for the display of the magazine, we have with here a very special guest, a very distinguished personality from Oman. She has a lot to her credentials. I don't know exactly what to say. There's a richness about her, but I can just mention few things. She in 1998 she was selected as a stage host of a famous TV quiz program, Tariq Aziz Show, which was hosted for the first time in Oman. And this is how she went on to become a great artist here in Oman. She's a renowned poetess who pens her own poetry and short stories about social issues in Urdu language and represented her poetry internationally in 2 different regions. She also has written several articles based on social matters, both in English and Hindi. And she's been declared and awarded by former Indian ambassador, His Excellency Anil Wadhwa, as the only female commentator in Southeast Asia during his tenure in Oman. And she became a member of Oman Cricket Academy in 2012 and completed her training. She received the opportunity to perform in a live stage play by the beautiful name Beautiful Oman, under the patronage of Ministry of Social Development, Baladia Muscat and Oman TV, which was presented to the audience. She has received numerous awards and accolades from different communities in Oman. And she also has received an award from Girija Bakir Foundation, Woman Achiever of 22 acknowledgement for her services.
His Excellency Mr. Amit Narang, the Ambassador of India to the Sultanate of Oman, honor her with a Versatile Actress Award 2022 for her film Avantika with Youth. And I welcome her with this little couplet on stage. Rang khushbu, gulab ki baatein. Rang khushbu, gulab ki baatein. कैसी प्यारी है आपकी बातें, बचपने की हंसी वो यादें, जैसी है कोई ख्वाब की बातें. Welcome Azra Begum to our show. Thank you so much. खुशामदीद. Thank you so much. कैसे हैं आप सब? Jazakallah khair. Thank you so much. First of all, I would like to say thanks to Pooja ji for the wonderful anchoring she was doing, and now Sherbana Sahiba. Thank you so much. The detailed intro. I said to her that can you cut this? It's too long maybe. And I would like to thanks to PLG to inviting me for such a wonderful ladies evening. And I really learned a lot of beautiful ladies. Such a wonderful title with the flowers totally matched. And our chief guest, Madame Nasra Adawi, here and explaining so nice way. It's amazing and it's quite inspiration for all of us. And without wasting the time, now I'm going to start the poetry. And as the November month is start and Oman National Day, as we all say, the flags are everywhere waving on the poles. And for that, I dedicate this poetry because I would like to convey the congratulations to His Majesty, His Highness, His Majesty Sultan Haitham bin Tariq for the 52nd National Day of Oman. So this poetry is for that, and the flower will be there in it. So you will find it, the flowers. So it's in Urdu. With the permission of our President, Madame Mrs. Tofel, and our chief guest, I would like to start in Urdu. इस चमन के पास बां साहिबे सुल्तान हैं, इस चमन के पास बां साहिबे सुल्तान हैं, इल्म हिकमत का बयां साहिबे सुल्तान हैं, इल्म हिकमत का बयां साहिबे सुल्तान हैं, सहरा कोहसार में हैं कुमकुमों की रौनकें, सहरा कोहसार में हैं कुमकुमों की रौनकें, एक मदारे कहकशां साहिबे सुल्तान हैं, एक मदारे कहकशां साहिबे सुल्तान हैं, रोज अफ्जों इस्तवार राह खुशहाली की हैं, रोज अफ्जों इस्तवार राह खुशहाली की हैं, इज्जतो अजमत ओमान साहिबे सुल्तान हैं. और फिर फूलों का तस्करा. फूलों से महकी हुई राहें कतार अंदर कतार, फूलों से महकी हुई राहें कतार अंदर कतार, शादमानी का बयां साहिबे सुल्तान हैं, शादमानी का बयां साहिबे सुल्तान हैं, हो मुसंदम सूर निस्वा या सलाला उ सुहार, हो मुसंदम सूर निस्वा या सलाला उ सुहार, वालिए हिफ्ज़ो अमा साहिबे सुल्तान हैं. सब सुर्ख सब्ज़ो सफ़ेद परचम जा बजा हैं सर बुलंद, सुर्ख सफ़ेद सब्ज़ परचम जा बजा हैं सर बुलंद, जोशो जज्बा निशां साहिबे सुल्तान हैं. और मक्ता आप सबकी नज़र पेश करती हूँ कि आपकी ताज़ीम में अज़रा कलम ने लिख दिया, आपकी ताज़ीम में अज़रा कलम ने लिख दिया, सब पे हैं जो मेहरबान वो साहिबे सुल्तान हैं, सब पे हैं जो मेहरबान वो साहिबे सुल्तान हैं, इस चमन के पासबां साहिबे सुल्तान हैं, इल्म व हिकमत का बयां साहिबे सुल्तान हैं. बहुत शुक्रिया. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अजरा जी, हमको डेफिनेटली ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको नसरा जी को देनी चाहिए, ये पेश करेंगी. जी श्योर, आई विल. बहुत खूबसूरत आपकी, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा. और आपकी जो सिमी जी, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, फ्लावर लगाए में आपने बेला के, मैंने वो मान के लगा लिए थे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. कल स्पेशली मैं रात में जाकर लेकर आई थी और
बहुत अपने सुंदर। ग्रुप पर भी डाल दिया था कि ताकि इंस्पायर होके कुछ और लोग भी फ्लावर्स, तो सबने माशाल्लाह आज फ्लावर्स लगाए हैं, गुलाब लगाए हैं। और विनीत, अरे वाह, आपने तो ओमान नेशनल डे के पूरे फ्लावर्स 3 कलर में लगाए हैं, बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी मैं कहने वाली थी आपको बहुत अच्छी लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही है ये व्हाइट फ्लावर्स लगा के। बहुत ही प्यारी लग रही है। बढ़िया। Nasra, this was in the praise of Yes. our Sultan, our present Sultan. Thank you, Azra, for beautiful poem. And I think I felt the word when you talked Sultan hai, ilmet, hikmet, that His Majesty Sultan Haytham has such a knowledge and hikmah for his political approaches, and I'm we who live in Oman, we are very thankful and blessed because that road was started by His Majesty Qaboos, and he actually gave and engraved the path for our nation to be peaceful and as well to bring the other nation together. And I love the way you talked about the qalam, which is for us as in Arabic, which is a pen, and also it's a metaphor of as well knowledge and inscripting. Maybe I don't know what you said, but I'm hoping that it is inscripting peace and sustainable continuity for peacefully for our nation. Exactly, mashallah. You got everything, mashallah. So I think I need to learn now. I'm getting hint here and here that today is a starting for me to learn another language. Many Thank words you, of Arabic Azra. in it. Thank you so much, madam. Thank Yes. you. Thank you, Jazakallah. So it's honor for us. This is from all of us here and in Oman, anywhere we have respect. Oman is our second homeland. Alhamdulillah. Thank you. I'm truly honored. Thank you so much. Thank you, Azraji, for blessing us with a lovely poem. And may I invite Vibha Tiwari, as I think we are running short of time now, almost 2 hours, up than 2 hours, Vibhaji. So Vibhaji is from the editorial board, the most hardworking and dedicated member, the oldest one from PLG. And without her, nothing is possible in PLG, all the editorial works. So I invite you on stage, Vibhaji, for the display of the magazine. I must say before that, Vibha ji, blue flowers बहुत अच्छे लग रहे हैं. Wow. Yeah, इसके इंतजाम में लग गया थोड़ा देर. And Nasra Al-Adawi, I want you to witness a display of our magazine and unravel the magazine. Thank you, Shirvanuji, and I welcome our honorable chief guest of this evening. And I'm listening to her for a long time. She's very learned and very dedicated, and she's taking much more interest in our program today. So, thank you. This is why I'm here. I hope I'm benefiting everyone. Yes, definitely. So here we go. This is our weekly magazine, PLG weekly magazine. Every week, all those poems which we are reciting in our weekly program are collected and they are displayed in this magazine. So this is the collection of poems and report of this, the memorable evenings which we are creating on this virtual platform each Saturday. So this is our last week's magazine, and the cover is designed by Mr. Anil. So Mr. Anil, he wanted to say something in some sarcastic way. Actually, last week the program was about mentoring about methods of poetry, like दोहा लेखन के विषय में कुछ प्रोग्राम था. Couplets, दोहा means couplets. So one of our mentors, he described how to write couplets, the value और वजन, मात्रा जो भी होता है, मीटर जो उर्दू या हिंदी पोइट्री में होता है, तो दोहे के बारे में और गजलों के बारे में बातें की गई. और ये जो अनिल जी ने बना के खूबसूरत सी तस्वीर भेजी है,
So alternative current or direct current, अगर आप physics पढ़ते हैं, so it also goes through some theories of physics. Like a mentor is like a rectifier. One who has studied physics in the, they can easily understand. A mentor works as rectifier, and it allows alternative current and direct current in their students. So the last episode was about mentoring. So the picture perfectly goes with the theme. And then comes the report. And at the second page, the very first page, the PLG office and boards and all the media editor and media managers, editorial board, and our very own IT manager, and so many people who help us in publishing this magazine. The names are displayed here, and on the next page, the report is prepared by our global head, Anupam Ramesh Kingarji, and she is also our media reporter. Here, this is the picture of Mrs. Anupam Ramesh Kingarji, and she was also the anchor of the day last week's. Last week's anchor of the day was Mrs. Anupam Ramesh Kingarji, and then comes our honorable mentors, and then the participant poets who studied and who went through the lessons of poetry. And this is the list of our honorable poets who participated. And then this is at the second last page, we display the list of upcoming programs. From here, you can see which programs we are going to perform on the next very evening, next Saturday evening, and then the banner, which is displayed for the promotion of our program. So this is the magazine, which is dedicated to our honorable guest, the chief guest. Wow, mashallah. Thank you very much. Beautiful magazine. Thank you, ma'am. Thank you, Vibhaji, for the wonderful display of the magazine. And Nasral Adavi, I hope you liked our venture week after week. This is what we painstakingly do after each event of ours. Thank you so much. First of all, applaud all the teams. We say it in Arabic, behind Kawalis, that means behind create an issue and in a magazine. Today, the world is actually no longer appreciating, written or paper magazines and the work to keep and sustain, especially poetry. When people talk about poetry, people undermine the power of poetry, even though there is research and even factual that poetry and journaling is now complementing the work of mental wellness. For the experts who are working in mental wellness, they are now actually asking people to write poetry, and now they're asking people to journal, because that's the way people can sustain their emotional and mental wellness. And you've heard from Priti, who spoke about it, so beautiful how words have saved her and made a change and gave her that resilience. So I applaud what you're doing, because these are non-profit work, and all of it is volunteer work, and a lot of us with families, with kids, we have no time to volunteer, and that is really appreciated, that you've put the great efforts to sustain this work, not only to sustain the magazine, but to sustain the group.
It's a hard work that has been put forth. But you should understand that what you are doing is creating a miracle. Miracle how? Because you are united for the words, and you are united to keep yourself healthy, to keep doors of continuity against the rides and the waves of life. Thank you, Nasra. Thank you so much for your wonderful, inspiring, motivating, and true words from the heart. We'll always remember this. Thanks for appreciating us. So applaud for all of you. You deserve that part. Continue the work. And please, this is a word of advice. If you have that, voice inside you that says, what am I doing in this group? Remind yourself, this is the place where you are becoming vibrant. This is where you take of energy, so you could go back to life and back to work and back to your kids and back to your family, because this is the space that gives you the voice. Yeah. Fabulous words, beautiful words. Exactly, we feel the same way, the way you have described after each event is successful. You really stole our words and stole our heart today. Thanks a lot for gracing the occasion. And now the queen of this entire event, who's sitting prettily from the beginning with all the gajra in her head, may I invite the Director Operations to present a vote of thanks and end this event finally. Namaskar, good evening, and thank you so much, Shere Bano ji, for your wonderful that आपके ने जो बहुत खूबसूरत मेरे लिए अल्फाज बोले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने भी इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है। मुस्कुराता हुआ फूल सिखाता है हमें कि चाहे सुख हो या दुख, धूप हो या छांव, बस हमेशा मुस्कुराना है। स्नेहा जी के चले जाने से, अकस्मात चले जाने से हमें बहुत दुख है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज का कार्यक्रम PLG 137 लेडीज स्पेशल बहुत ही खूबसूरत रहा। मंच पर नारियों का गुलदस्ता, अलग अलग देशों के फूल, सभी की अपनी अपनी पहचान, लाजवाब। आज की इवेंट मैनेजर लेडीज ग्लोबल हेड शेरे बानो जी का मेनी मेनी थैंक्स। बहुत ही खूबसूरत लेडीज की महफिल सजाई है उन्होंने। आपने इस प्रोग्राम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। गुलाब की खुशबू आपने बिखेर दी है इस मंच को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। बिग क्लैप्स। वाह 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 वाह। शेरे बानो जी का बहुत शुक्रिया। आज की हमारी पहली एंकर फातिमा जी ने बहुत खूबसूरती से मंच का संचालन किया। डांसिंग के तो इनके हम फैन थे ही, अब इनके मंच के संचालन के भी हम फैन हो गए। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आज की एंकरिंग की। फातिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी दूसरी एंकर थी, आपने मंच को खुशनुमा बना दिया। और हमारी दूसरी एंकर पूजा संचेती जी ने भी बहुत अद्भुत मंच का संचालन किया। उनके मंच संचालन ने मंच को फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की तरह महका दिया। Thank you so much, Pooja ji, for your wonderful anchoring. I would like to thank Nasra Al-Adawi ji to find time out of her busy schedule and grace this event as chief guest. Your presence elevated the mood of all the participants and added flowery fragrance to today's program. अजरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आज की सभी नारियों ने बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी। अंजलि जी की रचना सादगी से भरा हो अपना जीवन। मानसी जी की रचना मेरी रचनाओं का मुमकिन ये शुख़-ए-हाल होता है। अर्चना झा जी की रचना कोने कोने से सुमन चुनकर। बबली जी की गजल तेरी इश्क के शमियाने पर बैठी हूँ। रुचि जैन की गजल दिल लगी अच्छी नहीं दिलबर। पूर्णिमा जी की गजल शोख कलियों दिल के को संभालो जरा। स्मिता जी की रचना एक आंगन में फूल आई। समीना जी की रचना यादें। इंग्लिश पार्टिसिपेंट जो हमारी थी रंजना जी, उनकी पोएम थी टाइटल्स फ्लावर्स। दानिश रिजवी जी की पोएम सच ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक फ्लावर्स। मोमिता जी पोएम येलो लेडीज। विनी जी की रचना फूलों की तरह फूल हैं हम।
प्रीति जी की रचना जो थी माना का फूल हुस्न का दिलकश है अजीब है, उनकी रचना का शीर्षक वो शख्स। सकीना जी पोम द मैजेस्टी ऑफ फ्लावर, अजरा जी की जो इन्होंने जो इन पर हमारे सुल्तान पर उन्होंने जो बोला है, इस चमन के पाशपा साहिबे सुल्तान है। सभी लेडीज पोएट का मेनी मेनी थैंक्स। आपके आने से मंच फूलों जैसी खुशबू बिखर गई। आते रहिएगा इसी तरह मंच को इत्र की तरह महकाने के लिए। हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट तुफैल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट अनुपम रमेश किंगर जी, सतीश सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल हेड सोशल मीडिया कपिल बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रीजनल प्रेसिडेंट विभा जी, मनोरमा जी, अनिरुद्धा जी, शरद जी और खलीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया रिपोर्ट के लिए कपिल बत्रा जी, अनुपम रमेश किंगर जी, शेरे बानो जी, अनुपम कुमार पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ई मैगजीन के लिए चीफ एडिटर विभा जी, हिंदी एडिटर पूर्णिमा जी, आर्ट डिजाइन एडिटर डॉक्टर शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात एक अजीम शख्सियत के लिए अनुपम रमेश किंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए कपिल बत्रा जी, सतीश जी, राम स्वरूप दीक्षित जी, अनुपम रमेश किंगर जी, मुस्ताक सदफ जी, राम स्वरूप दीक्षित जी और ब्रज किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्टिफिकेट्स के लिए मनोवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टर एंड वीडियो के लिए आमिर तुफैल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यूट्यूब से देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का उत्साह बढ़ा रहे हैं। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। मुलाकात एक अजीम शख्सियत में, जिसमें हमारी अतिथि होंगी छोटी सी प्यारी सी बहुत ही प्रतिभावान डॉल जैती चौधरी और जिसे होस्ट करेंगी पीएलजी की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट अनुपम रमेश किंगर जी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you for that beautiful word of thanks. I really appreciate